बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आई वेरी गुड मॉर्निंग क्या है दोस्तों तव्हां ठीकु आहियो मज़े में सुबुह जो जॾहिं एनर्जेटिक लेवल हाई हुजे न त पोइ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे माण्हू डिम ढलो हलो हाय छॾियोसि त उन खां पोइ ज़ाहिर आहे मिज़ाजनि में बि मुख़्तलिफ़ शयूं उभरी ईंदियूं आहिनि सो इन करे जेकॾहिं सुबुह साण एनर्जी लेवल हाई हुजे त वाह वाह ऐं ॿियो त लोड शेडिंग ऐं गर्मी उहो ई लेवल हाई करे छॾी आहे सो इन करे जिथे हुजो ख़ुशि हुजो सुबुह साण या दुआ जिथे बि शायदि हुजो का सोच का कोशिशि अलाह उते साबिया ॾे ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐं उमेदु रखां थो जिथे किथे ख़ैरु हूंदो लोड शेडिंग जो अज़ार पूरे पाकिस्तान में आहे ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असां कराची खां कश्मीर ताईं ॻाल्हि कयूं त तक़रीबन 10 घटि में घटि 10-12 कलाक लोड शेडिंग आहे हर हंधि ते ऐं जिथे किथे आहे इनखे हींअर नथो डिनाए करे सघिजे त कुझु इलाइक़ा छॾे करे हींअर मोस्टली जेके बि कराची जा पोश इलाइक़ा जेके तसवुरु कया वेंदा आहिनि उते बि लाइट आहे सवाइ चंद इलाइक़नि जे जेका सभिनी खे ख़बर आहे उनखां अलावा सो बहरहाल असांजी दुआ आहे त शल रब पाक पूरे पाकिस्तान में इहा बती ॿारे पियो ऐं शल बिजली जनरेट थिए सभिनी ते पहुचे ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जे लाइ जेके असां वटि जेका प्रैक्टिस आहे जंहिंखे अलाह साईं मौक़ो ॾिनो आहे कुझु पंहिंजी हिमत कई अथनि कुझु कीअं करे जेका चोरी जी लाइट इस्तेमालु थिए थी जेका डायरेक्ट कनेक्शन आहे पोइ विसारे छॾींदा आहिनि त को केरु आहे न आहे पोइ एसी हलाए करे छॾींदा आहिनि बाबा कमिरो थधो रहंदो ऐं खामखा जूं लाइट्स त उन्हनि खे हथु ॿधी गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं इहा एसी बंदि रहंदी खामखा जूं लाइटूं बंदि रहंदियूं हिकु त बिजली बिल घटि ईंदो उते जिथे मीटर लॻियलु आहे पर जिथे मीटर नाहे डायरेक्ट आहे त उते बि हिननि खे त जेकॾहिं असां बंदि कंदासीं त कंहिं ग़रीब जो दुकानु हली सघंदो कंहिंजी झुगी हली सघंदी कंहिंजो रंधिणो पची सघंदो सो इन करे रंधिणे में जेकॾहिं गर्मी चाहियो था कंहिं ॿिए जे में बि उते बि चाहियो था त को चुल्हि ॿरे कंहिं ॿिए जे ग़रीब जे अझो जेको आहे सो आबादु रहे त उन लाइ इहे सभु सोचूं हिक ॿिए सां सलाहियल आहिनि ऐं घुमी फिरी अॻियां इहे शयूं साम्हूं ज़रूरु ईंदियूं आहिनि सो इन करे कर भला हो भला प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहे ॾाढी एनर्जेटिक आहे ॾाढी हिमत वारी असांजी भेण आहे जेका चवंदा आहिनि त इंसान में जेका आहे सा हिमत आहे उहा अलाह साईं हर कंहिं में त ॾींदो आहे पर पाण जेको हिमत पाण कंदो आहे माण्हू उहो वरी कोको हूंदो आहे जेको सम्झंदो आहे हर कंहिं मौक़े खे मुनासिबत खे ख़िदमत खे त असांजी जेका भेण आहे इहा जेको ज़हनी पोरियो करे पई उन सां गॾोगॾु जेको पाण फील्ड में वञी करे हक़ीक़ी जेका ख़िदमत आहे माण्हुनि जी सो इहा आहे त जॾहिं तव्हां फील्ड में वञो था माण्हुनि सां मिलो था तव्हांजो इंट्रैक्शन वधीक आहे त पोइ हिकिड़ो NGO जो जेको सेक्टर आहे उहो बि शानदार अदी जो कैरियर रहियो आहे उन सां गॾोगॾु किताब लिखिया अथनि शाइरी कई अथनि नसर लिखियो अथनि घणो कुझु उनजे शोल्डर्स ते आहे ऐं मञता एवॉर्ड बि मिलिया आहिनि जॾहिं वरी एवॉर्ड मिलंदा आहिनि त थक लही वेंदा आहिनि अॼु कचहरी कंदासीं असांजी प्यारी भेण ॾाढी एनर्जेटिक वेरी पॉज़िटिव जेस्चर पॉज़िटिव एटीट्यूड सां अदी हुमेरा नूर शेख साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम अदी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ख़ुशि आहियो त बि ठीकु आहे आफ्टर लॉन्ग टाइम तव्हां सां मुलाक़ात थी आहे हाँ बिल्कुल वो फेस्टिवल में मुलाक़ात थी आखिरी जेका थी हुई आखिरी फोटो आखिरी मुलाक़ात इहो किताब अचणु खपे टाइटल सुठो आखिरी मुलाक़ात पाण ॿिनी जो गॾु किताब हुजे हा न पर पंहिंजी न पर उहो आखिरी हो न पर वरी इहो बि त आहे न पर इहो टाइटल सुठो आहे आखिरी मुलाक़ात जो फोटो आहे आखिरी मुलाक़ात कहिड़ो हाल आहे इन ते नज़म बि लिखी सघिजे थी हा आखिरी मुलाक़ात आखिरी फोटो ख़ुशि आहियो अलाए शुक्र तव्हां ॿुधायो ठीकु लॻा पिया मां बिल्कुलु हैप्पी तव्हां माशाल्लाह राइटर शाइर उन सां गॾोगॾु NGO फील्ड में तव्हां जेको ज़बरदस्त कैरियर रहियो आहे पहिरियां आउं चाहींदुसि त हीअ जेका फील्ड आहे जेको तव्हां NGO मुख़्तलिफ़ NGOs में तव्हां रहिया आहियो ख़िदमत कई आहे इहो जज़्बो असांजे ख़ासि तौर ते सिंधी औरतुनि में घटि रहियो आहे मां जेको ॾिठो आहे मतिलबु मोस्टली जेको असां वारे पासे न हिते इन पासे अचण जो इतफ़ाक़ कीअं थियो ऐं उहा हिमत कीअं जुड़ी पहिरीं त महिरबानी तव्हांजी ऐं कुंदर साहिब जी जंहिं प्रोग्राम में घुरायो दावत ॾिनी ऐं ॿियो इहो त मुंहिंजी ज़िंदगी में इतफ़ाक़ आहिनि अच्छा वॾा इतफ़ाक़ आहिनि शाइरी इतफ़ाक़ आहे कालम निगारी इतफ़ाक़ आहे किताब छपाइण बि इतफ़ाक़ आहे त NGO में अचण बि इतफ़ाक़ आहे हाणे हीअ इतफ़ाक़ बि हिकिड़ो अजीब थियो त चंडोजाम में बाबा प्रोफेसर हूंदो यूनिवर्सिटी में पोइ उते कुझु छोकिरनि ऐं छोकिरनि गॾिजी करे हिकिड़ी NGO ठाही उन में मुंहिंजो भाउ बि शामिलु हो जेको मूंखां नंढो आहे एज में उहो बि शामिलु हो
पोइ हिननि उहा ठाही त सही हिननि नंढा नंढा कम करणु शुरू कया पोइ वरी हिननि जो पाण में डिस्कस कयो त कम त कयूं था पर कम औरतुनि खां सवाइ अधूरा आहिनि हाणे उन्हनि औरतुनि ताईं कीअं पहुचिजे पोइ उन्हनि पाण डिसाइड कयो त पाण हर को पंहिंजे पंहिंजे घर मां हिकिड़ी औरत आणे त उहे अची मेंबर थियनि पोइ उहे असां सां गॾु ॻोठनि में हलनि ऐं उते औरतुनि सां उहे मिलनि ऐं जेको असां कमु करणु चाहियूं था ख़ासि करे जेके नंढा नंढा कम हुआ ॿारनि जी एनरोलमेंट आहे ॿारनि खे स्कूल मोकिलणु आहे ॿारनि खे टुका लॻाइणा आहिनि उन्हनि जी सिहत सफ़ाई आहे घरनि जी सफ़ाई आहे पाड़े जी सफ़ाई आहे इहे जेके नंढा नंढियूं अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ उन सिलसिले में औरतुनि सां मिलणो हुयो असां वटि मुसीबत इहा आहे त माल बि उते त माण्हू बि उते त ॿार पेशाब थो करे त उहो बि उते आहे त माल थो करे त उहो बि उते आहे पर उहा जेका गंदगी आहे उनजो अहसासु माण्हुनि खे न आहे हिन वक़्तु बि ॻोठनि साॻी हालत आहे पोइ उन सिलसिले में हिननि ग्रुप ठाहिणु शुरू कया फार्म आयो मुंहिंजे भाउ अची मुंहिंजी वॾी भेण खे ॾिनो त चयईं वठि ऐं भरे ॾे त हुन खणी ईअं उछलायो बाक़ाइदा उछलाईं चई हा मां इहे कमु कंदसि त मुंहिंजी अम्मी फार्म खणी मूंखे ॾिनो चई मेरा तूं भरे छॾ माना घर मां हिकिड़ो मेंबर हलियो वञे नालो थी वञे न घर जेको भाती आयो मूं फार्म भरे ईअं ॾेई छॾियो भाउ जो नालो ॾेई छॾियो छो जो अम्मी मुंहिंजी बि समाजी कारकुन बि रही सियासी कारकुन बि रही टीचर बि हुई त हुनखे उहो अहसासु हुयो त इहो कमु थियणु घुरिजे पोइ फार्म ईअं ई भरे ॾेई छॾियो तक़रीबन 10 ॾींहं खां पोइ कॉल आई त तव्हांजी लाहौर में ट्रेनिंग आहे लाहौर में ट्रेनिंग थी वई 10 ॾींहंनि जी इतफ़ाक़ मुंहिंजो माना स्टार्ट मुंहिंजो ईअं ई थियो घुमण फिरण सां थियो ऐं बग़ैर के सोचण सम्झण जे थियो का प्लानिंग न हुई ऐं ज़हन में बि न हुयो हुन खणी पनो उछलायो ऐं मुंहिंजे उहो हिसे में अची वियो त पोइ ईअं तव्हां ट्रेनिंग थी ट्रेनिंग खां पोइ वरी तक़रीबन उहो साल जी ट्रेनिंग हुई मुख़्तलिफ़ शहरनि में माना उनखे असां RDP ग्रेजुएशन चवनि पिया पोइ उहा साल जी पूरी कई उन खां पोइ वरी फौरन ई मां अञा BA जा एग्ज़ाम बि कोन हुआ त रिज़ल्ट बि कोन आयो त मूंखे वरी जॉब मिली वई NGO सेक्टर में जॉब मिली NGO में तरह त पैकेजिस बि सुठा हूंदा हुया बनस्पति गवर्नमेंट जे हिन जे थोरा पैकेजिस थोरो माहौल कॉर्पोरेट टाइप जो लॻंदो हुयो मतिलबु अॻे माण्हू घटि हुआ हा कमु घटि हुयो सही ऐं वॾा वॾा इदारा खोड़ हुआ अच्छा ठीकु आहे त हाणे ज़ाहिर मिसाल तौरु जीअं मां हाणे हिकिड़ी छोकिरी हिन वक़्तु MA वारे खे छोकिरी MA पास खे छोकिरी खे जाम मुश्किल सां मिले थी मूं त सिर्फ़ु BA जा एग्ज़ाम ॾिना हुआ पर मूंखे मिली वई छो जो छोकिरियूं घटि हुयूं मिलनि कोन पई इवन हिन वक़्तु बि जेकर अगरि मां दादू में जॉब कयां थी पई त मूंखे बि दादू में जॉब इन बिहाफ ते मिली त उते छोकिरी का मुस्तक़िल रहे कान थी जेका ट्रेनिंग कराए उन्हनि खे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का बि न पई मिले जेका उते रहे या उते कराए त पोइ मूंखे उते हैदराबाद खां दादू मोकिलियो वियो ऐं मूंखे माना फैसिलिटेट कयो वियो त तव्हांखे असां रहाइश ॾियूं था ॿियूं फैसिलिटीज़ ॾियूं था तव्हां उते रहो दादू सुठो शहर आहे न दी कहिड़े हिसाब सां सुठा माण्हू आहिनि न दादू सॼी सिंध सुठी आहे न पर दादू थोरा वधीक सुठा माण्हू आहिनि न दी काछे वारा त ॾाढा ॾुखिया आहिनि जोही काछो ॾाढो ॾुखियो आहे तल्ख़ तजुर्बो आहे अच्छा बाक़ी सुठा आहिनि अच्छा डिपेंड करे थो पाण ते बि डिपेंड करे थो न तव्हां अॻे सां सुठो हलंदा त तव्हां सां बि को सुठो हलंदो ऐं ॿियो तव्हां सां सुठो हले थो त तव्हांखे रिस्पॉन्स सुठो ॾियणो आहे बाक़ी रही ॻाल्हि कम जी त कम में को बि ख़ुशि न आहे तव्हां कंहिंखे केतिरो बि ॾियो हाणे असां ठीकु आहे तव्हां अगरि NGO सेक्टर सां वाबस्ता न आहियो पर जेकॾहिं मिसाल तौरु 2010 ऐं 11 वारी तव्हां बोर्ड ॾिसो त केतिरियूं NGO मैदान में लथियूं गवर्नमेंट ख़ुदि हुई आर्मी हुई ॿिया इदारा हुआ उनजे बावजूदि माण्हुनि जी रड़ बंदि न थी त असांखे न मिलियो असांखे न मिलियो माण्हू दर बदर उहा ई हालत त इहो असां वटि इहो आहे त माण्हू कंहिंमां ख़ुशि न आहे ऐं बेसिकली क़ुर में बि लिखियलु आहे त माण्हू लालची आहे त उहा जेका लालच आहे न अंदर जी उहा तव्हांखे कॾहिं ख़ुशि रहणु नथी ॾिए पई तव्हां केरु तव्हांजे लाइ केतिरो बि करे त इहा ई शइ आहे त कमु त हले पियो NGO जो डिपेंड करे थो उन कम ते बि डिपेंड करे थो उन एरिया ते बि डिपेंड करे थो ऐं वर्क ऑफ सिचुएशन जेका आहे उन ते बि डिपेंड करे थो पियो त आहे छा ऐं असां ॾियूं छा पिया ऐं ॿियो ॾियण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे ख़ैराती नमूने ॾियूं पिया या सम्झाए ॾियूं पिया या को थोरो थपे ॾियूं पिया या असां फ़र्ज़ु सम्झी ॾियूं पिया त इहे 4-5 शयूं आहिनि उहो पाण ते डिपेंड करनि थी पयूं पाण ते बि कनि थी पयूं ऐं जेका इदारे जी पॉलिसी आहे उन ते बि कनि थी पयूं अच्छा ॿियो तव्हांजी लिखणु शाइरी उन में तव्हांजो पंहिंजो कहिड़ो किरदारु रहियो ऐं तारिक आलम अबरू साहिब सां बि हिकिड़ी वेझड़ाई रही फैमिली सां ऐं सभिनी शयुनि जो त उहो बि असरु रहियो या तव्हांजे अलॻि मुंहिंजी जेको चयो हर शइ मुंहिंजे लाइ इतफ़ाक़ आहे त मूंखे शाइरी सफ़ा न वणंदी मां कॾहिं मूंखे यादि आहे जॾहिं बि को TV ते मुशाइरो हलंदो तॾहिं त असां नंढा हुआसीं त PTV हूंदी PTV ते को मुशाइरो हलियो त मां TV बंदि करे छॾींदी हुअमि या उथी हली वेंदी हुअमि रेडियो ते बि इहा हालत हूंदी न वणंदी मूंखे शाइरी चिड़ ईंदी त इहो कनि छा था ऐं इहो कुदरती 100% इतफ़ाक़ आहे ऐं
मां वेठी हुअसि मंझंदि जे टाइम 3 बजे टाइम बि मूंखे यादि आहे 3 बजे त ईअं अलाए अचे थो दिमाग़ में के शयूं आयूं त इहो वरी ख़्यालु अची वियो त इहो लिखी छॾियां भले जेको अचे थो दिमाग़ में उहे 11 सिटूं हुयूं हिकु ई दम मूं लिखी छॾी लिखी कापी ते रखी छॾियूं उन खां पोइ रोज़ का न का शइ थींदी मूंसां माना कमु कंदे कमु कयां पई मानी खां पई त का न का ज़हन में अचे पई त पर इहो त मां लिखंदी वेंदी हुअमि डे 1 खां पोइ जॾहिं 4 महीना थी विया लिखी छॾियमि त पोइ कराची जी पुकार अख़बार हूंदी उन में अतिया दाऊद हूंदी हुई इंचार्ज हुई औरतुनि जो सुफ़ो हुयो त उन में अनाउंस थियो त तव्हां पंहिंजी शाइरी या पंहिंजी का बि लिखणी मोकिलियो त मूं चवां लिखणी आहे त बि मोकिले छॾियां अलाए छा आहे यकीन सां ॼाण ख़बर न हुई त शाइरी आहे छा आहे पोइ मूं उहो मोकिले छॾियो 4 ॾींहं खां पोइ उहा मुंहिंजी जेका शाइरी जेके 11 सिटूं लिखियूं उन 11 मां उन्हनि हिकिड़ी सिट कढी बाक़ी 10 सिटनि ते उन गज़ल लिखी छापे छॾियो उन खां पोइ 3 सिटा छपिया पोइ इहो मुंहिंजो छपण जो सिलसिलो हलंदो रहियो बाक़ी मुंहिंजो वालिद साहिबु राइटर हुयो कालम निगार हुयो शेख साहिबु अफ़साना बि हुननि लिखिया शम्स शेख साहिबु हा जी अफ़साना बि हुननि लिखिया ऐं सिंधी अदबी संगत पनो आकिल जा हू सरगर्म कारकुन बि हुआ ताज बलोच साहिब सां गॾु सरवर सैफ आरम साहिब सां गॾु त तमामु घणा एक्टिव हूंदा पोइ वरी जॾहिं टंडजाम यूनिवर्सिटी में अची विया त पोइ उन्हनि जो कट ऑफ थी वियो त जेके चई सघिजे थो त जेके वालिद जा जरासीम आहिनि लिखण वारा उहे घर में असां 7 भाउ भेण आहियूं 7 मां इहा शइ मूं में आई इहो बि इतफ़ाक़न हो मुंहिंजो लिखण बि इतफ़ाक़न हो किताब बि ईअं ई अलाए कीअं ओचितो ख़्यालु अची वियो न पोइ तव्हां ज़ाहिरा हिकिड़ो थिए थी वालिद साहिब सां उनसियत बि थिए थी न विझड़ाई थिए थी या हुनजे लिखण पढ़ण सां थिए थो कॾहिं न थियो आहे अच्छा कॾहिं माना इहा शयुनि ते ज़िक्र न थियो त हीअ शाइरी आहे हीअ कालम आहे बाक़ी हा इहा शइ ही असांजे घर में उर्दू सिंधी डाइजेस्ट असां वटि ईंदा हुआ अख़बारूं असां वटि ईंदियूं रिसाला असां वटि ईंदा हुमेरा चयो इहो वेंदो आहे त सुठे लिखण लाइ सुठे ॻाल्हाइण जे लाइ तव्हांखे पढ़णो पवे थो तव्हांखे ॿुधणो पवे थो त उहो असां पढ़ियो सुठो ॿुधो सुठो पढ़ो त पोइ तव्हांजी ॿोलीअ में बि निखार अचे थो तव्हांजे लिखण में बि निखार मूंखे यादि आहे त जॉब खां अॻु में या जॉब खां पोइ बि मूं कॾहिं अख़बार जी का हिकिड़ी ख़बर बि न छॾी हूंदी 5 सुफ़ा हूंदा 4 सुफ़ा हूंदा सभु पढ़ंदी हुअसि सभु मूंखे यादि हूंदियूं पोइ घर वारा मूंखां पुछंदा उमेरा खां पुछो अॼु छा थियो उमेरा खां पुछो अॼु ध्यान तलब में किंजा नाला आया अच्छा मिनिस्टर को नई काबीना नहीं ठहंदी त पोइ उमेरा खां पुछो काबीना में नओं मिनिस्टर कहिड़ो आयो आहे या कहिड़ा वज़ीर आहिनि त मां उन गौर सां पढ़ंदी हुअमि ध्यान सां पढ़ंदी हुअमि सॼी अख़बार पढ़ंदी हुअमि डेली त ज़ाहिर उहो पढ़ण जो जेको असरु आहे न उहो वधीक मूं ते हावी थियो पोइ मां रिसाला बि पढ़िया मैगज़ीन बि पढ़ंदी हुअसि कहाणी सभु पढ़ंदी हुअमि कालम सभु पढ़ंदी हुअमि त उहो पढ़ण वारो असरु मूं ते हावी थियो उन जे करे ई शायदि मुंहिंजो लिखण जी तरफ़ ओचितो ई ओचितो काफ़ी किताब आहिनि तव्हांजा 4 किताब मां लिखी चुकी आहियां मां ऐं तूं किताब आहे ॿियो कोई बि न तूं ऐं मां आहे ज़ाइफ़ा ज़ात आहे ऐं गुंगियूं ज़िंदगियूं आहे ज़ाइफ़ा ज़ात औरतुनि ते उहे औरतूं जिन सां गॾु मूं कमु कयो आहे थर में कुझु ॿियनि इलाइक़नि में ऐं गुंगियूं ज़िंदगी में बि कुझु ट्रांसजेंडर आहिनि जेका असांजा खदड़ा फ़क़ीर आहिनि उन्हनि जूं तक़रीबन 8 खनि स्टोरियूं उन्हनि जूं आहिनि रियल माण्हुनि सां पाण मिली उन्हनि खां पोइ मां उन्हनि ते लिखियो आहे ऐं ॿिया वाक़िया आहिनि कुझु किरदार आहिनि जेके रियल किरदार आहिनि मतिलबु इन किताब में तव्हांखे का बि आर्टिफिशियल शइ न आहे सभु रियलिटी आहे हक़ीक़त आहे नसर में 2 किताब शाइरी में ऐं मूंखे को शाइर मञींदो कोन्हे को न हूअं बि तव्हां माशाल्लाह राति सफ़र करे आहियो इस्लामाबाद मां हूअं बि चवंदा आहिनि न त 2 माण्हू वेठा गॾु सफ़र पिया कनि त पहिरें चयो त पहिरें ॻाल्हाइणु शुरू कयो साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो मज़े में हुन चयो साईं बिल्कुलु ठीकु ठाक साईं तव्हां छा कंदा आहियो त हुन चयो साईं मां शाइर आहियां त पहिरीं साईं माफ़ु कजो मां गूंगो आहियां इन खां पहिरियां जो वरी शुरू थिए मूंखे को शाइर मञींदो ई कोन्हे को मूंखे कंहिं चयो त तूं शाइरा नथी लॻी कंहिं हिन पर इलाहिनि चयो त तूं शाइरा नथी लॻी त पोइ उन्हनि खे इहो चयो मां ख़ाली शाइर न आहियां मां सोशल वर्कर बि आहियां मुंहिंजो रोज़गार बि आहे मुंहिंजो घर बि आहे मूंखे ॿिया बि कम आहिनि ख़ाली शाइर हुजां त पोइ वेही चरिया पिया कयां न त इन करे खोड़ सारी ज़िमेवारियूं आहिनि त माण्हू पंहिंजे पाण खे उन हिसाब सां सेट रखे थो पियो मतिलबु दिलचस्पी तव्हांजी वरी बि शाइरी सां या वरी नसर सां शाइरी इतफ़ाक़ आहे थी वई हाणे त मां लिखी छॾींदमि बाक़ी नसर मूंखे वणंदो आहे ऐं मां लिखणु चाहींदी आहियां मुशाहिदो आहे त जेके तजुर्बा थिया आहिनि उन्हनि ते त उहो ॾाढो सवलो आहे मूंखे सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट खपे बसि लिखण लाइ हिकिड़ी पॉइंट खपे त हिनखे जेको ॾुख आहे छाजो आहे हीअ ख़ुशि आहे त छो ख़ुशि आहे बसि इहा पॉइंट खपे मूंखे या जेकॾहिं को खदड़ो फ़क़ीर अचे थो ऐं अची उहो हथु टंगे थो त हुन मां उहो जो शरीयत में वाज़े लिखियलु आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन चयो आहे
त मूंखे 3 शयूं नथी वणनि, उन में हिकिड़ी शइ हथु टंगणु आहे, माना पिनणु आहे। त जॾहिं को खदड़ो फ़क़ीर अची करे पिनंदो आहे न त मुंहिंजा यकीन कयो लिंग कान ॾींदा आहिनि। त अलाह साईं हिकिड़े पासे अलाह साईं पाण हुकुम कयो आहे त इहा शइ मूंखे नथी वणे, ॿिए पासे हिननि जो रिज़्क़ ई हिते आहे, त इहा शइ मूंखे परेशान कंदी आहे। इहो असां वटि आहे न, हा, ॿाहिरि त ईअं न आहे, ॿाहिरि ईअं न आहे, पर असां वटि सिस्टम इहो आहे, हे त खणी ही ट्रांसजेंडर्स आहिनि, पर ओवरऑल आम माण्हू जेके पढ़ियल लिखियल उहे हाणे जहिड़े हालात आहिनि त हाणे जेको वाइट कलर जॉब आहे उहो त कंहिंखां घुरी बि नथो सघे। असां वटि त हिकिड़ो प्रैक्टिकली हथु टंगनि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ो ॿियो अहिड़ो जेको हालात ऐं वाक़ियात आहिनि त उहे बि त इंसान खे मजबूर था कनि, हाणे कंहिंखे न चई सघनि। जेको फैशन थी वियो आहे, जेको रोज़गार थी वियो आहे, ब्लैकमेलिंग थी, हिकिड़ी माफ़िया ठही वई आहे, त उहो बि त आहे न। पोइ शाइरी में हुमेरा छा थी ॿुधाए असांखे, कोई यादि आहे को पंहिंजो? न एॾी आहियां ई कोन यादि हुजे, लिखियल पढ़ी मोबाइल ते अॼुकल्ह डिजिटल आहे सभु न, इहो उहो तॾहिं त को मञींदो ई कोन, मूंखे चवंदा आहिनि तूं शाइरी ॿुधा, मूंखे यादि ई कान्हे। बसि हाणे अदी हुमेरा जी शाइरी ॿुधूं था ऐं पोइ कोशिशि कयूं था त अदी हुमेरा जेका साम्हूं पई आहे मां तव्हांखे ॿुधी पहिरीं पहिरीं। प्लीज़। ॻाल्हि हक़ जी हुई, ॻाल्हि हक़ जी हुई पर छिनण कोन आयो, ॻाल्हि हक़ जी हुई पर छिनण कोन आयो, विढ़ियासीं हर पल पर पिनण कोन आयो। इहो अरमान हाणे अरमान ई रहियो आहे, इहो अरमान हाणे अरमान ई रहियो आहे, लंघियो दर वटां पर मिलण कोन आयो। इरादूं ऐं नियतूं हुयूं मन अंदर में, इरादूं ऐं नियतूं हुयूं मन अंदर में, हा मिलण जी कयमि पर वञण कोन आयो। हा मिलण जी कयमि पर वञण कोन आयो। पिरह फुटी ओ दाता नारंगीअ रंग में, पिरह फुटी ओ दाता नारंगीअ रंग में, दीदार त कयोसीं पर पसंदि कोन आयो। हू पखीड़े जीअं आयो ऐं उॾरी वियो, हुई दिलि पिंजरो पर रखण कोन आयो। हिकु ख़ुशबू ऐं हिकु प्रीत मरंदे ॾिठमि, सॉरी हिकु ख़ुशबू ऐं हिकु प्रीत मरंदे ॾिठमि, सूर सीने में हो पर सलण कोन आयो। ॻाल्हि हक़ जी हुई पर छिनण कोन आयो, विढ़ियासीं हर पल पर पिनण कोन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, रियली ॾाढो ज़बरदस्त। कुझु मूं उर्दू शाइरी बि कई आहे, पोइ मां हिकिड़ो इहो उर्दू बि ॿुधायांव थी। तेरी एक नज़र में जमाल था, तेरी एक नज़र में जमाल था, तेरी एक नज़र में कमाल था, जब दोनों मिले तो जवाल था। क्या बात है। अब मेरा एक सवाल है, तेरे जमाल को जवाल है या जवाल तेरा कमाल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हलो ज़बरदस्त, तव्हां ॿुधायो, तव्हांजी ॾाढी ज़बरदस्त शाइरी आहे, हे त असांखे त अॼु ख़बर पई आहे। सची ॻाल्हि आहे, तव्हां एतिरी सुठी शाइरी था कयो। देरि करे छॾी आहे न। हा। अच्छा हिकु ॿियो आहे, अखियूं दर बदर थी वयूं, अखियूं दर बदर थी वयूं, सोचूं मुंतशिर थी वयूं, हुन जूं दोस्तियूं हाणे मूंखां मोतबर थी वयूं। वाह वाह वाह। जेकी गॾु हुयूं काल ताईं से बि अॼु बेख़बर थी वयूं, हसरतूं मन मंझां निकिरी कातिलनि जे नज़र थी वयूं, आख़िरी कोशिशूं लॻे थो त हुन मथां बेअसर थी वयूं। जेतिरियूं बि चाह में घारियमि, जेतिरियूं बि चाह में घारियमि, घड़ियूं से ज़हर थी वयूं। नाहे पहुच ख़ुशबू जी ॾिसो, नाहे पहुच ख़ुशबू जी ॾिसो, हू त शम्सो कमर थी वयूं, अखियूं दर बदर थी वयूं, सोचूं मुंतशिर थी वयूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तव्हां माशाल्लाह तारिक आलिम अब्दुल साहब सां, हा उन्हनि सां अदबी खां घटि पर्सनल वास्तो हुयो घणो, ऐं रज़िया तारिक मुंहिंजी दोस्त आहे सुठी, ऐं उन सां रहियो, ऐं तारिक सां बि माना मुलाक़ातूं त रहियूं, पर अदबी कचहरी कॾहिं कोन कई। इहो ज़िंदगी जो माना छा चइजे, कॾहिं कॾहिं मूंखे ख़्यालु लॻंदो आहे त इहो ख़्यालु रहिजी वियो, माना उहो रहिजी वियल मंज़र रहिजी वियो, उहो मूं रहिजी वियल मंज़र मूं वटि रहिजी वियो, त उन सां करे अदबी कचहरी कजे आहे, पर कॾहिं बि अदबी कोन थी, बसि पर्सनली ईअं हाल अहिवाल थियो। बाक़ी इहो आहे त मुंहिंजो कज़न्स आहिनि ॿ, नईम शेख ऐं तुफ़ैर शेख, ॿई सुठा शाइर आहिनि, लेखक आहिनि, ऐं अदबी संगत सां वाबस्ता रहिया आहिनि। बाबा जो असरु आहे, अम्मी बि मुंहिंजी कुझु न कुझु लिखंदी हुई थोरो घणो, त उहो असरु आहे। ॿियो बाक़ी मूं पढ़ियो आहे शेख अयास ऐं अयाज़ गुल, अदर सुमरो, परवीन शाकिर आहे, फैज़ अहमद फैज़ आहे, त इन्हनि खे पढ़ियो, ज़ाहिर आहे उहो पढ़ाई जो असरु, रिसाला अख़बारूं उहे पढ़ियूं आहिनि, त उन्हनि खां मुतासिर थी लिखियो। रुख़साना प्रीत मुंहिंजी दोस्त बि आहे, सुठो लिखे थी पई, सुठी शाइरा आहे,
उनखे पढ़ियो आहे या ॿिया जेके बि नौजवान नसल जा शाइराऊं आहिनि अयूब खोसो आहे त इन्हनि सभिनी खे बाक़ाइदा पढ़ूं था त पढ़ण जो जेको असरु आहे उहो बि त रहे थो पियो त उहो जेको अदबी माहौल पढ़ण बि अदबी माहौल आहे न तव्हां जेकॾहिं का सुठी शइ पढ़ो था पिया ऐं पंहिंजे ज़हन में रखो था त उनजो असरु बि तव्हां ते तव्हांजी शख़्सियत ते तव्हांजे लिखण ते तव्हांजी सोचनि ते पए थो पियो त पोइ उहो असरु मूं ते घणो आहे बिनस्बत ॿियनि जे चयो मां अदबी प्रोग्राम घटि अटेंड कंदी आहियां मुशाइरा घटि अटेंड कंदी आहियां ऐं अदबी संगत में त आहियां ई कान शुरू खां ई कोन आहियां कंहिं बि न आहियां कंहिं बि अदबी प्रोग्राम संगत में न आहियां या को बि अदबी ग्रुप में न आहियां त उहा शइ न आहे बाक़ी हाणे जेको पाण ऐं हीअ मवाद हीअ अख़बारूं हीअ रिसाला बसि उहा ऐं हूअं बि असां पंहिंजो नालो रखियो न अदबी संगत थोरी अदबी संगत थी वई आहे हा अदबी हा इहो ई चई सघो था पर मूं वटि अदबी बि कान्हे अधु पहिरीं बि कान्हे अदबी बि कान्हे का त इन करे इन करे असां दोस्तनि खे सञाणे पाण में काफ़ी इख़्तिलाफ़ात आहिनि शल ख़तमु थियनि बिल्कुलु सही ट्रैक ते सभु अचनि त न ईअं मूंखे ईअं लॻंदो आहे त जहिड़ो अदबी संगत या सियासी पार्टियूं इहे सियासी पार्टियूं कोन्हे अदबी संगत कोन्हे जहिड़ो घरु आहे त घर में त जहिड़ा थींदा आहिनि पर घर आहे ऐं हीअ प्लेटफॉर्म धार ॿाहिरि न अचनि ॿाहिरि न अचनि हीअ वरी ॿाहिरि अचनि थियूं मीडिया ते अचनि थियूं ऐं गार गन ताईं पोइ अदीब में ऐं आम माण्हू अदीबनि खे त साईं हाणे महिरबानी करे अदबी संगत जे लाइ कुझु न चइजो हाणे अदबी संगत आहे अदबी संगत आहे सो इन करे असां कोशिशि कंदा आहियूं त ॿई बाक़ाइदा माना एॾियूं गारियूं जो तव्हां ॿुधाए बि नथा सघो पिया असां नथा करे सघूं ऐं असां अफोर्ड न करे सघंदा आहियूं ऐं असां वरी कंहिंखे परमिशन बि ॾींदा आहियूं कंहिंजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए ख़ैर अदी हुमेरा एॾो ज़बरदस्त वास्ट एक्सपीरियंस रहियो आहे तव्हां प्रैक्टिकल रहिया हो माशाअल्लाह औरतुनि सां मर्दनि सां ऑफिसुनि में हिकिड़ी डटके हिकिड़ी पंहिंजे भरम खे क़ाइमु रखनि ज़बरदस्त कमु कयो छा था ॾिसो हिकिड़े पासे तव्हां वटि ज़ारा थर में बि तव्हांजो एक्सपीरियंस रहियो हूंदो मां उते बि दादू में पोणा 5 साल रही आहियां थर में बि पोणा 5 साल कीअं था ॾिसो थर जी औरत खे ऐं काछे जी औरत इहे ॿई नाला अहिड़ा आहिनि ॿई पासा अहिड़ा आहिनि जेके असांजी गुफ़्तार में असांजे ॻाल्हियुनि में असांजे मसइलनि में इन्हनि जा नाला ईंदा आहिनि हिकिड़ो सजाद हिकिड़ी शइ जेका असां आम तरह चई वेंदी आहे त हीअ वेचारी आहे हा इनखे कहिड़ी ख़बर आहे हीअ अबोझ आहिनि ईअं न आहे मां इन जे ख़िलाफ़ु आहियां अच्छा ठीकु तव्हां हरू भरू मां इहो न हिकिड़ो माण्हू ग़रीब आहे ठीकु तव्हां हुनखे चवंदा तूं त ग़रीब आहीं तूं त ग़रीब आहीं त हू अहसास कमतरी में ईंदो हीअ वेचारी आहे तूं त वेचारी तूं छा कंदी हुनखे तव्हां जेतिरो हू अॻे ई वेचारी आहे वनरेबल आहे उनखे तव्हां वधीक जेकॾहिं वनरेबल चवंदा या वेचारी करे चवंदा अबोझ करे चवंदा तोखे ख़बर कोन्हे तूं त अनपढ़ियल आहीं तो छा ॾिठो त हू वधीक डाउन थींदी इन खां अगरि तव्हां हुनखे ॿाहिरि नथा कढी सघो त हुनखे अंदरि दॿायो बि न सही ॾिसो थर जी औरतुनि वॾा वॾा ट्रॉलर्स हलाए करे ट्रॉलर हलाए करे तव्हां हुननि जो हुनर ॾिसो हथ जो हुनर ॾिसो केॾो वास्ट आहे जेको हले पियो पूरी दुनिया आई वञे पियो ठीकु आहे जेका माई पढ़ियल ई कोन्हे हुनखे कलर कॉम्बिनेशन अचे थी पई उहा किथां सिखी आहे कुदरत हुनखे सेखारियो आहे पंहिंजे हालतुनि हुनखे सेखारियो आहे या हुन विरसा विरासत में हुनखे इहे शयूं मिलियूं आहिनि दादू में बि ईअं आहे काछे में बि ईअं आहे तव्हां छबियूं त ॾिसो जेके काछे में ठहनि थियूं जोई में ठहनि थियूं छा त हुनर आहे पीश मां केॾियूं सुठियूं सुठियूं शयूं ठहनि थियूं भई पीश जो त इहो ई कॉन्सेप्ट आहे पर हाणे ॾिसो तव्हां पीश मां तव्हांखे बहितरीन शयूं मिलनि थियूं उन्हनि खे असां त कोन सेखारियोसीं हीअ पोली जेको जूस आहे या कोई बि जूस आहे उन जूस जे ख़ाली दॿनि मां जेके शोपीस ठहनि था मुसला ठहनि था टोकरियूं ठाहिनि थियूं छबियूं ठाहिनि थी पियूं बाक़ाइदा स्ट्रा वर्क जो कखपन जेको असां उछलाए छॾींदा साड़े छॾींदा उन मां जेके शयूं ठहनि थी पियूं त इहो सभु छा आहे जेकॾहिं माई वेचारी आहे बेअकुल आहे त उहो छा इहो कमु करे सघंदी कोन करे सघंदी हुनखे कलर कॉम्बिनेशन जी बि ख़बर कोन पवंदी इहा नई नई जेका वैरायटी जेका हुनखे ख़बर कोन पवंदी मार्केट जी हुनखे ख़बर कोन पवंदी हा इहा आहे त हुनखे वॾी मार्केट कोन थी मिले पई त हू पंहिंजी शइ पहुचाए सघे कराची ताईं लाहौर ताईं इस्लामाबाद ताईं मौक़ो मिलियो आहे कमु करण जो सभु शयूं छा इरादा आहिनि छा टारगेट आहे ॿ शयूं हिकिड़ी शइ इहा आहे त मौक़ो त मिलियो आहे पर तव्हां बेवस आहियो जीअं मां आहियां मां एम्प्लॉई आहियां ॿिए इदारे जी मां पॉलिसियुनि जे ॾाढो मजबूर आहियां त मां उन इन ते अचां थी त मां हुननि लाइ डायरेक्ट कुझु नथी करे सघां मां ज़ाहिर पॉलिसी में रही करे कंदमि उन में जेको आहे मां उहो कंदमि हा बाक़ी तव्हांजो ॿियो सुवालु त मां छो थी कयां त इन ते मां हाणे वर्किंग कंदमि इनशाअल्लाह त जेको हुनर आहे मेहड़ में ॾाढो सुठो हुनर आहे प्यारो स्टेशन वारे पासे वञूं उते वरी हिकिड़ो ॿियो हुनर आहे हथ जे भर्त जो काछे में ऐं वरी उन खां पोइ जो ही वाही पवंदी उते वरी ॿियो हुनर आहे थर जो हुनर सफ़ा डिफरेंट आहे ठीकु आहे त इहे सभु या इंटरनो मोहम्मद ख़ान आहे मातली आहे अहिड़े नमूने जकबाद आहे नसरपुर आहे हाला जो त हाणे पूरे वर्ल्ड में हले थो त इलाही हुनर मौजूदु आहिनि पर इलाही औरतूं बि अहिड़ियूं आहिनि जिन खे मार्केट कान्हे का त मुंहिंजो इहो हूंदो आहे त तव्हां या त हिकिड़ो लेआउट ठाहियो ठीकु आहे
आउटलेट ठाहियो हिकिड़ो, आउटलेट में तव्हांजो मटीरियल हुजे। मां इहो चाहींदी आहियां त जंहिं माई खां तव्हां कमु था करायो उनखे 50% एडवांस ॾियो। तव्हां हुनखे चओ त हीअ वखण सां मूंखे ठाहे ॾे, इहो ग़लति आहे, इहो ज़्यादती आहे। हू अॻे ई परेशान, हुन वटि आहे कुझु कोन, हू जीअं तीअं पंहिंजो कमु करे पई। पर हिनखे तव्हां घटि में घटि 50% ॾियोसि, हुनखे कमु सम्झायो, उनखे कलर कॉम्बिनेशन ॿुधायो, डिज़ाइनिंग ॿुधायो, ऐं कपिड़े जी नफ़ासत कीअं रखिजे, कपिड़े खे कीअं बहितर ठाहे सघिजे थो पियो, कपिड़े जी वैरायटी कीअं हुजणु खपे, इहे हुनखे नंढी नंढी ट्रेनिंग ॾिजनि, हुनखे सम्झाइजे हाणे तूं कमु कर। उनखां पोइ हुनखां कमु वठी हुनखे 50% ॿियो ॾेई छॾिजे। पर असां वटि ईअं नथो थिए पियो। बसि हुनखे चओ तूं सामान ठाहे ॾे, तूं कमु करे छॾ, हीअं करे इंटरनेट आहे न आहे, नेटवर्क आहे न आहे। हाणे मां तव्हांखे सिंपल मिसाल ॿुधायां थी त असांजी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, एग्ज़िबिशन हुई, ठीकु आहे। असां दादू जामशोर डिस्ट्रिक्ट जो सामान औरतुनि खां वरितोसीं, उन्हनि जो जेको ठाहे विकिरो कंदियूं आहिनि। सामान सॼो लोड 10 लख जो सामान हो सिर्फ़ु दादू मां। उहो 10 लख सामान असां लोड करे छॾियोसीं। त बसि चयूं सुभाणे कोविड अची वियो त बाबा कॉन्फ्रेंस लेट आहे, अञा अॼु थींदी, ॾिसो ॿुधायूं था ईअं कंदे सामान पूरो हफ़्तो लोड लॻो पियो हुयो। उनखां पोइ असांखे हफ़्ते खां पोइ ॿुधाइनि त कॉन्फ्रेंस कान्हे का, एग्ज़िबिशन कान्हे का, हाणे सामान वापसि। हाणे सारा उहो जेको लोड थियल सामान वरी इहो सॼो खुले, उहो वरी ॻोठनि वापसि वञे त 15 ॾींहं त थी विया। हाणे नुक़सानु कंहिंजो थियो, उन ग़रीब माई जो थियो। हुनजा जेको हू पाण विकिरो करे आहे उहो बि विकिरो न थी सघियो। असां वटि 15 ॾींहं सामान पियो हुयो, उहो बि न थी सघियो। असां हुनजो को विकिरो न कराए सघियासीं। त माना घटि में घटि मुंहिंजो ज़मीर मलामत करे थो त असां हुनखे ॾेई त न सघियासीं, पर असां हुनखां उहो रहंदो हुनखे नुक़सानु हुयोसीं। त ज़ाहिर आहे हुनजो मथां अच्छा वरी ईद बि हुई मथां। त हू चए थी त हाणे मां पंहिंजे ॿारनि लाइ छा वठां, इहो विकिरो करे ई मां पंहिंजे ॿारनि लाइ कुझु वठां। त मां इन जे ख़िलाफ़ु आहियां, छो जो असां इदारनि में जॾहिं वेहूं था न त पोइ असां बाउंड आहियूं, त उते असां कुझु बि नथा करे सघूं। पर मां पंहिंजी तव्हां ज़ाती ॻाल्हि अगरि तव्हां चओ था त पोइ ज़ाती ॻाल्हि मां इहो चाहींदसि त मां अहिड़ो इदारो ठाहियां जंहिंमें मां हुननि खे नुक़सानु न ॾियां, घटि में घटि हुनखे नुक़सानु न ॾियां, फ़ाइदो त थींदो ई थींदो। बहरहाल अदी तव्हां ॾाढा ज़बरदस्त सोचूं, ॾाढा ज़बरदस्त जज़्बात आहिनि। छा मैसेज ॾींदव असांजी भेनरुनि जे लाइ, ॾिसण वारनि जे लाइ? मैसेज इहो आहे त जेको बि कमु कयो पहिरीं खां त हुन में ईमानदारी हुजे, नियत ख़राबु न हुजे। त अगरि मूंखे सजाद खे फ़ाइदो न आहे ॾियणो त नुक़सानु बि न आहे। मुंहिंजो पहिरियों इहो मैसेज हूंदो आहे त घटि में घटि तव्हां हुनखे नुक़सानु न ॾियो। ॿियो इहो असां वटि हिकिड़ो ॾाढो हूंदो आहे त ज़ाहिर कंहिं ॻोठ में वञूं था त चवंदा महिमान नवाज़ आहियूं न पाण, खाओ खाओ खाई वञो, हीअ खाई वञो। त घटि में घटि तव्हां कंहिंजे घर मां पहिरीं ॻाल्हि त खाओ न। इहो असांजी माना असांजे इदारे जी बि पॉलिसी आहे त तव्हां कंहिंजे घर में खाओ या पीओ न। जेकॾहिं खाओ पीओ था त उहो थोरो बैलेंस करे अचो। असांजा माण्हू पाण वञी हुनखे चवंदा आहिनि, मां सॼी ओवरऑल ॻाल्हि थी कयां, ॻोठनि में वञी चवंदा आहिनि बाबा असां मानी खाईंदासीं, हले मानी ठाहियो। इहो सोचो त हुन वटि गिहु आहे न आहे, हुन वटि खंडु आहे न आहे। त असांजा माण्हू सोचींदा न आहिनि। त मां इहो चवां थी जेके बि NGO सेक्टर में साथी आहिनि या ॿिया बि, त घटि में घटि ऑर्डर न हलाए, ज़बरदस्त उनखां पंहिंजी मर्ज़ी जो न घुरनि त असां मानी खाईंदासीं। त इहा शइ न करियो। को तव्हां वटि तव्हां कंहिंजे घर वञो था, ज़ाहिर महिमान नवाज़ हर कोई आहे, पंहिंजी हैसियत हर कोई कुझु न कुझु खाराए थो पियो, त उहो मिले थो त ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह। बाक़ी ऑर्डर ॾेई मूं इलाही असां हमेशह हिन प्रोग्राम जे तवसुल सां चवंदा आहियूं त जॾहिं बि थर में मींहुं वसंदो आहे सभु ॾेई हलिया वेंदा आहिनि। ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजूं गाॾियूं भरे वञो, उन्हनि जे लाइ तोहफ़ा तहफ़ वठी वञो। असां वटि हितां वेंदा, उन्हनि वटि महिमान थी करे उहे वीचारा पंहिंजे वसार ख़िदमतूं कंदा, उधार वठी वरी वापसी ते गज ऐं लोई जेका हूंदी आहे उनजी बि ज़हन में रखींदा आहिनि, शायदि मिलंदो। त भई तव्हां हितां गिफ्ट खणी वञो, तव्हां हितां ग्रॉसरी खणी वञो उन्हनि जे लाइ, तव्हां उन्हनि जे लाइ तोहफ़ा, उन्हनि जे लाइ वॻा, उन्हनि जे लाइ सभु शयूं हितां वठी वञो ताकी उन्हनि खे बि अहसासु थिए ऐं घुमी फिरी मोटिजो पंहिंजे हिसाब सां। रहण टिकण, रातूं रहण ऐं उन्हनि खे तकलीफ़ में विझणु ऐं उन्हनि जे ॿारनि खे तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां थी, इलाही टाइम आहे अलाए न अदी। हा बसि असांजा अंग्रेज़ आया हुआ लंडन खां, उन्हनि असांजी ट्रेनिंग वग़ैरह कराई, त इतफ़ाक़ सां मुंहिंजी सालगिरह हुई। त उन सालगिरह में वरी फ्रूट वग़ैरह आयो हुयो, त हुननि पहिरीं मना करे छॾियो त तव्हांखे जेकॾहिं करणी आहे त सफ़ा अंदरि कयो त फ्रूट जी ख़ुशबू बि ॿाहिरि ताईं न वञे। सही ॻाल्हि। ऐं जेकॾहिं खाओ था पिया त उन जी का बि ॿिज या खल बि उहा बि ॿाहिरि न वञे, त हू ईअं न त हू वीचारो ग़रीब ॾिसे हसरत में सोचे त इहो छा आहे। त इन करे असांखे माना इहा शुरू में ई ट्रेनिंग ॾिनी वई त पहिरीं ॻाल्हि त अहिड़ी शयूं खाओ न जो हू फील करे। ॿी ॻाल्हि जे खाओ था त हुननि जे लाइ बि घुरायो, उहे ॿार हुजनि या मायूं हुजनि, मर्द। सही ॻाल्हि आहे। वरी महिरबानी अदी हुमेरा, इंशाअल्लाह ताला इहे सिलसिला जारी रहंदा। फर्स्ट सेशन असां ॾाढो सुठो रहियो। वरी नेक्स्ट असां डिटेल में कचहरी थींदी तव्हांजी नंढपिण खां वेंदे अॼु ताईं जी। इंशाअल्लाह ताला वॾी महिरबानी। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक खां पहिरीं अदी हुमेरा नूर शेख सां कचहरी कईसीं ज़बरदस्त।
ॾाढी सुठी सोच, ॾाढी वेरी पॉज़िटिव। चवंदा आहिनि त पॉज़िटिव माण्हुनि सां मिलण बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं जेके उहे पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि उहे शेयर थींदा आहिनि त यकीनन उहो डिप्रेशन बि ख़तमु थींदो आहे, एंज़ाइटी ख़तमु थिए थी ऐं उन सां गॾोगॾु मस्बत सोच अंदरि में अचे थी, ज़हनी अवसर थिए थी। ऐं हींअर बि ॾाढो ज़बरदस्त पॉज़िटिव असां वटि गेस्ट आहे, ॾाढो ज़बरदस्त आहे, बहितरीनु शेफ़ आहे। ऐं असां चवंदा आहियूं त जेके घर वारा ख़ासि तौर ते घर वारनि जे आसिरे ते न वेहनि त उहा हली वेंदी मेके या पेके रुसी त पोइ केरु पचाए ॾींदोसि, पाण खे अचणु खपे, बेदो वेदो हे हो पचाए वञे ताकी इन में न रहे माण्हू त सुभाणे छा थींदो, सो पचाइणु अचे। सो अॼु असां वटि जेको महिमान आहे ज़बरदस्त शेफ़ आहे, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनजो नालो आहे ऐं कीअं नालो अथनि उहो कचहरी कंदासीं। मथां वरी उज़ई वारी ईद अचे पई, उते कहिड़ियूं कहिड़ियूं रेसिपीज़ हुजणु खपनि, छा छा ठहणु खपे, छा छा पचणु खपे ऐं सिखण लाइ आख़िर कहिड़ी आर्ट आहे जेका खपे थी, उन कचहरी कंदासीं। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन नालो कमायो आहे। BBSYDP जे प्लेटफॉर्म तां डिग्री हासिलु कयूं। ॾिसो इहे प्रोग्राम्स केॾा ज़बरदस्त थियनि था। कचहरी कंदासीं। ज़बरदस्त शेफ़ आहे, दुबई में कमु कंदो आहे। अॼु असां वटि मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे महर अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं महर भाई? आपका मुस्कुराना तो बड़ा जालिम है, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं महर भाई। थैंक यू सो मच। इतने अवार्ड तो हमारे जवानों किसी जवान को मिलते हैं, आपने माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड इकट्ठे कर लिए। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, घर वालों की सपोर्ट है और अपनी लगन शौक है, तो वो ले जाती है इंसान को। जाहिर है जब एक इंसान आप ख्वाब देखते हैं, आप एक पैशन रखते हैं किसी भी चीज़ का और फिर उसको हासिल करने के लिए आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर वो आप हासिल कर ही लेते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त लग रहे हैं आप पर माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपका अपना अंदाज और ये सारी चीज़ें, कहाँ से ये शौक़ था? हमारे यहाँ तो मर्द हजरात जो होते हैं वो तो मतलब खान सामा, हाँ वो कहते हैं हमारे यहाँ ये मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि खान सामा है या ये लेडीज़ का काम है। हम लोग आज तक इस चीज़ से निकले ही नहीं आगे कि यार हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान अगर कोशिश करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो बस इसी चीज़ को सोचा, घर वालों की सपोर्ट थी, बचपन से अपनी अम्मी के साथ कुछ ना कुछ कर लेते थे। तो बस उस शौक़ को लेके जब ज़ाहिर है जब बड़े हुए इस फील्ड की तरफ सोचा कि यार इसमें कुछ करना चाहिए। तो बस फिर मैंने जब तकरीबन 2012 में BBSYDP से मैंने कोर्स किया। पीथम से कराची में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने कोर्स किया और उसके बाद फिर मैं जो है ना 2014 में मैं दुबई चला गया। क्या बात। और बस वहाँ से फिर कमालात शुरू कर दिए। जी जी दुबई में। बिल्कुल। तो ये पहले तो हम चाहेंगे कि हम आपका ये सर्टिफिकेट देखें जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। जी बिल्कुल। ये क्या है, क्यों मिला था हमारे महर भाई को? ये जी बिल्कुल, ये एक्चुअली वहाँ पर दुबई में अबू धाबी में ये हुआ था शो, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया से ऑल अराउंड डिजर्ट्स पेश कर। जरा इस कैमरे को दिखा दें महर भाई। हाँ जी। अच्छा। ये उन्होंने पूरी डिजर्ट्स पेश करनी थी जो जिसमें हर मुल्क की अपनी अपनी डिजर्ट्स थी। अच्छा। तो 2586 डिजर्ट जो है ना वो सब ने पेश की थी। अच्छा। लेकिन मैंने वहाँ पर एज इंडिविजुअली लिया था। अच्छा। खुद मैंने बजाते खुद वहाँ पर हिस्सा लेकर और जो है ना इसमें पाकिस्तानी डिजर्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया था। ज़बरदस्त। इसमें 52 डिजर्ट्स थी और उसकी मुझे तकरीबन हर डिजर्ट्स की 4-4 प्लेटें 45 मिनट्स में हमें सर्व करनी थी। जो हमने 208 प्लेट्स मैंने जो है ना वहाँ पर क्या बात है सर्व की और वो रेसिपीज़ उनको वहाँ पर पसंद भी आई और उन्होंने इसको पास किया। तो उसके ऊपर फिर ये मुझे ये सर्टिफिकेट। बहुत खुशी हुई होगी उस वक्त। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी सारी मेहनत भूल गया। हाँ बस यही था कि बस मैं वो कहते हैं ना कि ये भी एक ख्वाब था कि यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इस चीज़ में भी नाम आता है क्या बात तो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा शौक है, तो मैं इस चीज़ में क्यों ना हासिल करूँ। सही। और मैंने ये हासिल अब इसको कायम भी रखना होता है ताकि ये कोई और जो है वो तोड़ ना सके इस रिकॉर्ड को। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अब मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे अगर सपोर्ट मिले और कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले तो मैं ट्रॉफी भी लेकर आऊँ इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वहाँ ये इस चीज़ों की वहाँ पे अब वो ट्रॉफीज भी मिलती हैं। मतलब कि वो पूरा एक कंपटीशन के एंड में, क्योंकि अगर जिसकी ज़्यादा अच्छी ज़्यादा मेडल्स होते हैं ज़्यादा कैटेगरी। तो कौन से खाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? देसी खाने हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, चाइनीज़ हैं, मैक्सिकन हैं? जाहिर है यहाँ तो हम देसी करते थे। यहाँ तो अपना ही जो है पाकिस्तान इंडियन फूड तो देसी कहलाता है। हाँ ये तो हम देसी करते थे। वहाँ ये है कि वहाँ फिर कॉन्टिनेंटल और अरेबिक कॉन्टिनेंटल और मेडिटेरियन ये सारा फूड जो है ना इस पे होता है।
پر میری زیادہ تر کوشش جو ہوتی ہے، میں نے جو میڈلز بھی اگر لیے ہیں تو اسی چیز میں لیے کہ میں نے اپنے پاکستانی کھانوں کو تھوڑا انگلش اسٹائل میں تھوڑا سا میں نے ان کو ٹچ کر کے، یعنی کہ ایڈ کر کے ان چیزوں کو، انگریڈینٹس کو، تو میں نے اس طریقے سے اس چیز کو پیش کیا. یعنی اگر میں لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے کمپٹیشن کیا تھا تو وہاں کے ججز جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کوئی پاکستانی انگلش ڈش آنے والی ہے ہمارے سامنے. تو ایسا ہے. آپ کی تصویریں ابھی چل رہی ہیں ادھر اپنا اسکرین پہ، تو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ آپ نے جو ریپرزینٹ کیا ہے ملک کو، سب کو، اور خوشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. زبردست زبردست ماشاءاللہ سے. تو 2012-13 سے تقریباً آپ کو 10 سال ہو گئے مطلب سرٹیفائیڈ ہوئے اور یہ کام کیے. ہاں، پیتم سے جب میں نے کورس کیا تھا تو 2011-12 میں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں 2014 میں دبئی چلا گیا تھا. تو اس ٹائم سے ہی مجھے تھا، تو میں کیونکہ ظاہر ہے وہاں آپ اتنی آسانی سے اس چیز میں نہیں جاتے، آپ کو پہلے چھوٹے لیول پہ کمپٹیشن کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو وہ انٹری کرنی پڑتی ہے. تو وہ سب پھر انٹری بھی وہاں آپ کی ایسے نہیں ہوتی، ظاہر ہے آپ کو کچھ کر کے وہاں دکھانا ہوتا ہے، آپ کی کوئی کمپنی کی طرف سے لیٹر ہو، اپروول ہو، وہ سب. اور پھر کمپنی بھی آپ کو ایسے اپروول نہیں دیتی جب تک آپ کی پرفارمنس کمپنی میں اچھی نہ ہو. تو وہ سب چیزوں کو جب میرے سامنے لسٹ آئی تو اس پہ مجھے 2-3 سال لگے. یعنی کہ میں 2016 میں پھر میں اس چیز میں انٹر ہوا 2 سال بعد. اور پھر میں نے چھوٹے چھوٹے مطلب کمپٹیشن کیے، تو ان میں بس سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا، اس طریقے سے کر لینا. 2019 سے یہ سیریس شروع ہوا کہ میں نے جب یہ برونز میڈل اور سلور میڈل اور گنیز ورلڈ ریکارڈ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے خود ممبرشپ آفر کی. تو یہ ایمریٹس کولینری گلڈ وہاں پر ایک پلیٹ فارم ہے یو اے ای میں، جو کہ پروفیشنل شیفز کو یا جو اس چیز میں شوق رکھتے ہیں وہ ان کو اپنے پاس لے لیتے ہیں ایز اے ممبر، اور پھر وہ آپ کو ججنگ میں آگے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں مہر بھائی، دنیا میں کتنا زبردست ہے، جو پروفیشنلز ہیں ان کو ریسپیکٹ بھی ہے، ان کے پیکیجز بھی اچھے ہیں. ایسا ہی ہے، اور آگے ایسے ہی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے میڈلز وغیرہ لیے ہیں تو انہوں نے خود مجھے اپنے ایز اے ممبر لیا، سینئر ممبر، اور پھر مجھے جو ہے نا ججنگ میں اپنے ساتھ لینا شروع کیا. کیونکہ پھر میں ماشاءاللہ سے اب وہاں پر اسسٹنٹ اپروو جج بھی ہوں. تو جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں، ریسنٹلی سلون کو لینیئر ہوا، ایکسپو کو لینیئر ہوا، تو اس میں میں نے ججنگ وغیرہ بھی کی وہاں پر. تو یہ چیزیں، یہ تصویروں میں زیادہ تر وہ بھی آ رہے ہیں، ججنگ کے بھی آ رہے ہیں. تو اچھا، آپ کی اپنی صحت بھی صحیح ہے ماشاءاللہ، تو آپ خود بھی کھانے پینے کی شوقین ہوں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں. ہر ایک چیز پھر جا کے واو نکلتی ہے نا. ہاں ایسا ہی ہے، ایسے ہی. مطلب پہلے تو اگر جب کوئی چیز کھاتا ہوں تو ایک دم سے فلیور کو کوشش کرتا ہوں کہ یار اس میں کیا کیا فلیور. اچھا، دنیا میں تو یہ باقاعدہ ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جو ٹیسٹ کر کے اور ذائقے کا بتاتے ہیں، اور پھر وہ رکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جی جی، میری بڑے بڑے ہوٹلز میں بڑی بڑی ایسا ہی ہے. میری ابھی جو ریسنٹلی میں جاب کر رہا ہوں تو اس میں وہ مجھے سختی سے کہتے ہیں، حالانکہ مجھے بڑا شوق ہے، تو میں کبھی بھی کوئی نئی چیز ہوتی تو میں کہتا ہوں میں کر کے دکھاؤں. کہتے نہیں، آپ صرف دیکھو کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور ٹیسٹ، یعنی کہ وہ ان کا مین یہی ہوتا ہے. اور پھر ہم اس چیز پہ بڑا آپ کو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ٹیسٹ، ایک ریسیپی بنائی، اور پھر ریسیپی تو آپ بنا لیتے ہیں، مین ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنا، اس کو وہی چیز دینا. کیونکہ آج ایک گیسٹ آیا، وہ میرے پاس آج کوئی بھی اسٹیک مطلب یا بریانی کھا کے چلا گیا، تو کل وہ اپنے کسی کو یا خود آئے گا تو وہ وہی کھانے آئے. اچھا، ویسے آپ کی ایکسپرٹی جو ہے بیف اسٹیک میں ہے نا؟ میری ماشاءاللہ سے میں بیکنگ میں ان سب میں میں نے اب عبور حاصل کر لیا، لیکن بیف اسٹیک میں لیکن میرا زیادہ تر یہ کہ بیف میں میرا زیادہ ہے. شاید ہم شروع سے یہاں بیف زیادہ کھاتے ہیں تو اسی لیے وہ بیف میں میرا زیادہ ہے. ابھی یہ عید آ رہی ہے، کیا دیں گے مشورہ دیکھنے والوں کو؟ تو یہی کہوں گا کہ آپ کھائیں، بے شک آپ کھائیں، بیف بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن آج کل جس طریقے سے بتا رہے ہیں جانورز میں بھی ہے تو آپ پہلے اس کو بوائل کر لیں. ٹھیک ہے، پھر بوائل کر لیں بیف کو، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا اپنا یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے گوشت کو. جس طرح اچھا، یہ جو گوشت نہیں گلتا اس کے لیے کوئی ٹپ دے دیں ہمیں مہر بھائی. ہاں، میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو کچری پاؤڈر یا جو بھی ہے، آپ سویا سوس ڈال کے اس کو 20 سے 30 منٹ کے لیے رکھ دیں. اچھا، گوشت کو تھوڑا سویا سوس اس میں ایڈ کریں اور اس کو رکھ دیں، یا بناتے ہوئے ہلکا سا 1 ٹی اسپون بھی سویا سوس ایڈ کر دیں گے، وہ گوشت کو گلا دے گا. اچھا، کیا بات ہے بھائی، ہم سیکھ گئے. جی جی بالکل، وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. بہت سارے سرٹیفکیٹس ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے زیادہ ڈسکس کروں، لیکن ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. کیا پیغام ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے یہی پیغام ہوگا میرا کہ آپ
मेहनत करें, अपना जो भी आपने मतलब आप पहले ये देखें कि आपने लाइफ में करना क्या है। जब आप इस चीज़ पर एग्री हो जाएंगे कि आपने लाइफ में ये चीज़ करनी है और मुझे इस चीज़ में आगे जाना है, और जब आप उस पर मेहनत करें, अपना टाइम दें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको टाइम के बगैर हासिल नहीं होगी जब तक आप उस पर टाइम नहीं देंगे। हम बहुत जल्दबाज हैं, हम सोचते हैं हमने आज जो किया हमें बस सुबह मिल जाए, उसका रिजल्ट, कुछ चीज़ों का रिजल्ट आपको बाद में मिलता है। मैंने 2008 में इस चीज़ को स्टार्ट किया, लेकिन मुझे रिजल्ट 2019 में मिलना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें हैं, आप अपना वक्त लगाएं, अपना टाइम दें, अपने बड़ों की इज्जत करें और अपने घर वालों को सपोर्ट करें, और घर वाले भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट भी को भी चाहिए कि वो भी सपोर्ट करे, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर ये कहते हैं, जब मैं कर भी रहा था तो सब ने कहा कि BBS YDP से कर रहे हो, गवर्नमेंट का कोर्स है, ऐसा है वैसा है, पर वो ऐसा वैसा नहीं है। आज भी अगर आप आए, मेरे पास वो रजिस्टर मौजूद है जो मैंने अपनी क्लास में बनाया था, और वो मुझे आज भी वैसे ही हेल्प देता है जैसे कि एक बड़ी रेसिपी बुक आपको हेल्प देती है। तो इसका मतलब ये कि हमें, हमारे पास है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, स्कोप, बस हमें एक क्लिक की ज़रूरत है, हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो हमें मिल जाए, तो हम दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आपकी बातें यकीनन हमारे नौजवान देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो कह रहे हैं कि यार खानसामा क्या बने कि, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो शेफ़ हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस जो हैं वो उन्हीं के होते हैं, और वो मर्द होते हैं। ऐसे ही है। और अब आप देखेंगे रिसेंटली कि अब एक शेफ़ आएगा जो चांद पर जाके खाना बनाएगा, इस पर वो काम कर रहे हैं नासा वाले। तो देखिए दुनिया, हो सकता है मैं और चांद पे खाना बना रहा हूँ। हाँ, वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं। तो देखें दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो इस चीज़ में स्किल्स हैं, और आप अपने खानों को, अपने मसालों को आप रिप्रेजेंट करें दुनिया के सामने, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम इस तरीके से भी आगे जा सकता है। क्योंकि जब हम वहाँ होते हैं तो हम स्पेशली रेकमेंड करते हैं कि मतलब इटली से आटा आए, या फ्रांस का हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, या वहाँ के हमें चीज़ चाहिए। तो ये सब कुछ तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, सब कुछ पाकिस्तान। ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया मेहर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी कामयाबियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। ॾाढी ज़बरदस्त कचेरी हली पई असांजी मेहर अली सां, जेको शेफ़ हुयो, जेको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुनजो नालो ऐं डिशिस ठाहिण जे लाइ। हाणे ईद आहे त ज़ाहिर आहे सभई पंहिंजो रेसिपीज़ ते ध्यानु ॾींदा, पर ईद वञण जे लाइ, ईद ते ॻोठु वञण जे लाइ ज़बरदस्त महिनत करणी पवंदी, छाकाणि त पेट्रोल महांगो आहे। पेट्रोल भरण लाइ ॾोकड़ खपनि, ऐं ॾोकड़ किथां ईंदा, कीअं थींदा, हर माण्हू सोचे पियो त यार जेकॾहिं ईद हिते कयूं, ॻोठु वञूं, छा कयूं, छाकाणि त अॻ में जेकॾहिं ॻोठु ॾे, जेकॾहिं पैसा असांजा बिलफर्ज़ 10,000 रुपया लॻंदा, त हाणे हुन जाइ ते 20-22,000 रुपया लॻंदा, त हाणे छा कयूं? त यकीनन ही बि 22-25,000 रुपया लॻंदा ओटमोट गाॾी जे पेट्रोल जे लाइ, ऐं रस्ते में टोल टैक्स बि हाणे ख़ैर असां पहिरीं तारीख़ खां ॿुधो आहे त उहो वधाइनि पिया, त वेंदासीं काॾे? ऐं ही कहिड़ा टैक्सिस आहिनि जेके हिडन टैक्सिस आहिनि, जेके ज़ाहिरी टैक्सिस आहिनि, पोइ उन में के मुख़्तलिफ़ नाला अची करे, ऐं असां ख़ासि तौर ते उन तबिके ते जेको आणियूं ऐं चाढ़ियूं ते यकीन रखंदो आहे, उन जा हालात हींअर तमामु घणा कशीदा आहिनि। बिजली जा बिल हुजनि, ॿारनि जी स्कूल जी फीसिस हुजनि, जाइनि जा किराया हुजनि, ट्रांसपोर्ट हुजे, का शइ ख़रीद करणी हुजे, हर शइ महांगी आहे। आमदनी उहा ई आहे। उन ते कचेरी कंदासीं, ज़बरदस्त एक्सपर्ट आहिनि, ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि। असांजा मोअज़िज़ महिमान आहिनि, जेका मुआशी सूरत हाल ते उनजी ज़बरदस्त अखि हूंदी आहे, नज़र हूंदी आहे। असांजा मोअज़िज़ महिमान आहिनि अतीक़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अतीक़ साहब? ठीक ठाक है? खैर अल्लाह पाक कैसे हैं? अतीक़ साहब, हालात दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हैं कि अब कुछ समझ, मतलब हमने ये सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। सच्ची बात है, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक जो गुज़िश्ता 3-4 महीने से ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। दिन रात चैनल्स पे जा रहे हैं, आजकल भरमार है चैनल्स पे इन चीज़ों की बात। अच्छा, आपने जो बात की ना कि क्या होगा, और आपने कहा कि ये इतनी मुश्किल में फंस गए, इसका मैं क्या जवाब दूँ? ये तो हर एक के पास यही सवाल है, मेरे पास भी यही सवाल है। मैं तो उल्टा आपसे पूछता हूँ कि ये हालात इतनी तेज़ी से ख़राब क्यों है, इसका होगा क्या? चलिए, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बड़े अदब के साथ कहता हूँ एक बात कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको क्या हो गया? ये क्यों नहीं सोच समझ के कर? देखिए, एक आम आदमी बेचारा जो फंस गया, मर गया, उल्टी छुरी से आप मुर्गी को ज़िबा कर रहे हो यार, और मुझे कह रहे हो कि या खुद कि क्रिकेट के ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेलो। तो मैं क्रिकेट के ग्राउंड में फ़ुटबॉल कैसे खेलूँ, कब तक खेलूँगा मैं? क्रिकेट का ग्राउंड दूसरा होता है, फुटबॉल का ग्राउंड दूसरा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्टार्ट इसको इस तरह से लूँगा कि आपने सब्सिडी दी, फ़र्ज़ करें मैं टाइकोन हूँ,
میں اپنی گاڑی میں کئی گیلن پیٹرول بھراتا ہوں اور میرا ڈرائیور جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جاتا ہے بیچارہ اپنی موٹر سائیکل میں 2 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہے. آپ اس کو بھی اتنے میں ہی پیٹرول ملتا ہے جتنے میں میرے کو ملتا ہے. صحیح. آپ سبسڈی دو نہ دو میرے کو, اگر میں ٹائکون ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ جو بیچارہ غریب ہے جس کی ایک لمیٹڈ تنخواہ ہے, تم اس کو 24-25 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہو, اس پہ وہ جو پیٹرول بڑھا رہا ہے اس کو کوئی کنسیشن نہیں مل رہا. آپ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر رہے. سبسڈیز کا اعلان تو کر رہے ہو لیکن اس کو سیگریگیٹ نہیں کر رہے ہو. کیا ہو گیا بھائی, سیگریگیٹ کرو نا. ایک غریب آدمی, ایک ڈپرائیوڈ آدمی اور ایک ٹائکون میں فرق ہوتا ہے. دیر از اے ہیوج گیپ اور یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس آگے ہی انڈر دی انفلوئنس ہے بجلی کے بل. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آتا ہے, وہ تو آئے گا ہی. صحیح. وہ تو اس سے بھی زیادہ آئے گا. لیکن اب وہ بجلی کے بل کو ہاتھ لگاتے ڈرتا ہے پتہ نہیں اس کے اندر کون سا فگر لکھا ہو. ٹھیک ہے, اس سے وہ بچ نہیں رہا ہے. دوسرا کیا ہے, انفلیشن ہے. انفلیشن پہ میں بحث نہیں کرتا, اتنے پرسنٹ, ہر آدمی کا پرسنٹیج الگ ہے. بہرحال ہو شربا انفلیشن ہے, مہنگائی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی. تیسری دفعہ آپ کی پیٹرولیم پرائسز کنٹینیوسلی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی آن کارڈز ہے کہ یہ بڑھ کے کوئی 300 کے بھی اوپر چلے جائیں گے پر لیٹر. اب آپ مجھے بتائیے, جو ایک سیلریڈ کلاس لمیٹڈ انکم والا وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک کی اکنامی میں اپنے ٹیکسز دے کر, آلریڈی کر رہا ہے. آپ 40 بلین روپیز آلریڈی اس سے نکال رہے ہو سیلریڈ کلاس. اب آپ نے جو ٹیکس لائبلٹیز ہیں جو آپ اس سے ٹیکس لیتے ہو اس کو آپ نے ڈبل کر دیا. مثال کے طور پہ جس کا 7.5% ہے اس کو 12.5% کر دیا آپ نے. ایک بندہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوا, ان سب چیزوں کا مصیبت کا مارا ہوا, آگے اپنے امپلائر کو کہہ رہا ہے مجھے کوئی کمپنسیشن دو. بھائی مجھے کچھ طریقہ نکالو. ہمارے لوگوں نے, انڈسٹریلسٹ نے کہا کہ سپر ٹیکس لگا, بہت اچھا ہوا, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, ملک کے پاس بڑا غریب لوگوں کو. آپ اگر کنٹریبیوٹ اس پہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کی تنخواہ 150% بڑھا دو. بھائی آپ سپر ٹیکس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو, بہت اچھا ہوا, ملک کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں برداشت. تو پھر یہ غریب جو تمہارے یہاں کام کر رہا ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, جس پہ اتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں, ٹیکس لائبلٹیز اس کی, تو 150% اسٹیٹ اوے اپنے امپلائی کی تنخواہ بڑھا دو نا. تو یہ جو ٹیکس لائبلٹیز لگی ہے, میرا پروٹیسٹ اب کہنا ہے کہ پلیز یار پالیسی میکرز اس طرف دیکھو یار, اس طرف دیکھو. بہت برا حال ہے. یہ اتنا بجائے اس کے کہ اس کی تنخواہ بڑھتی, اس کی تنخواہ مزید 20,000 روپے آپ اور کم کر رہے ہو ٹیکس لائبلٹیز بڑھا کے. یہ نہ کرو پلیز, یہ نہیں کرو, یہ انجیریس ہے, یہ لوگوں کو نقصان دے رہا ہے. اگر یہ ایک امپلائی دماغ کے سینسز میں رہ کر کام کرنے نہیں آئے گا, وہ ہیلدی نہیں رہے گا, وہ کام نہیں کر سکے گا, وہ پروڈیوس نہیں کر سکے گا, اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی, وہ آپ اس سے جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ وہ ہیلپنگ ہینڈ نہیں بن سکے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عتیق صاحب, ابھی چیخیں تو مزید نکلنی ہیں اگست کے مہینے میں. وہ کیسے؟ وہ اس سے کہ جب بندے جائیں گے اپنے بچوں کو اسکول لے کے, اور اسکول والے کہیں گے کہ بھائی یہ تو یہ فیسز دے دیں, اور اب جو وہ بیچارہ ابھی دوست کے ساتھ, کسی بھائی کے ساتھ بس پہ, وہ خود تو چلا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پہ, اپنے کام پر, لیکن جب یہ اسکولز کھلیں گے, بچوں کو جب ڈراپ کرنا ہوگا, پک کرنا ہوگا, گاڑیوں والوں کے الگ نخرے ہوتے ہیں, نخرے نہیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہوتے ہیں, اور بندہ خود جب وہ بچا رہا ہوتا ہے اپنا پیٹرول, تو وہ بھی اس کو دینے پڑیں گے پیٹرول, بار بار اس کو ڈراپ کرنا, اس کو لے جانا. اور یہ جو ابھی یہ ٹیکسز لگے ہیں مختلف بجلی کے بلوں پہ ادھر ادھر, وہ بھی اگست میں آئیں گے. تو اگست سے سپٹمبر کا کیا حال ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ بیچارہ آگے زندگی میں مفلوج ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, گزارا نہیں کر پا رہا, تو بچوں کو اسکول سے ہٹا دے گا, اسکول سے ہٹا دے گا. بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, بچے, ایک ڈراسٹک چینج آئے گا, ڈکریز آئے گی ان لوگوں پہ کہ بچوں کو نہیں پڑھا سک رہے, ہم ان کو اسکول نہیں بھیج سک رہے. آپ وہ تو بات کر رہے ہیں, آپ نے وہ والی بات بھول گئے, وہ جو آپ کے نیوز پیپر پرنٹ پہ 200%, 70% ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں, یہ والا ٹیکس, وہ والا ٹیکس, وہ والا ٹیکس, وہ والا ٹیکس, 5 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے اس پہ. آپ کا نیوز پیپر کتنا, نیوز پیپر, پرنٹ پیپر, لوکل پیپر, آپ کی ٹیکسٹ بکس نہیں پرنٹ ہو سکتی لوکل. سنگاپور, ملیشیا اور تھائی لینڈ میں بکس پرنٹ ہو کر آ رہی ہیں بچوں کے اسکول کی. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کیسی بات کر دی؟ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ اپنے بچے کو لوکل پیپرز کی چھپی ہوئی بکس نہیں خرید کے دے سکتے.
اچھا سر ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو انہوں نے ٹیکسز لگائے سر اس عوام بات پہ کو لگائے پورا کر لیں سر اس بات کو پورا کر لیں when you cannot drop your children to the schools because of the fuel cost, when you cannot buy books for your children because of the paper cost, and when you cannot afford the fees because you don't have that kind of money, آپ کی سیلری سے اتنا بچتا نہیں ہے کہ آپ اس کی فیس دیں, تو آپ کیا کرو گے؟ یہ آپ مجھے سوال کا جواب بتاؤ کہ کیا بچے پڑھے نا ظاہر رہ جائیں؟ ایجوکیشن پہ گورنمنٹ نے کتنا بجٹ رکھا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا رکھا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ نے کتنا رکھا ہے؟ ایجوکیشن کا کتنا کیئر کرے؟ ہمارے پاس تو سالے گھوسٹ سکولز ہوتے ہیں, سکول نظر آتے ہیں لیکن وہاں پہ بھیڑ بکڑے اور گدھے بندے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, وہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں ان کے. پھر بتائیں نا. اچھا سر عتیق صاحب یہ تو ساری چیزیں ہیں, یقین جانے ہر آدمی کا اب جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا اگریسو ہے, وہ ابھی مارنے کو تیار ہے. مارکیٹ میں جائیں سارا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے, وہاں جہاں وہ لوگ آتے تھے 20-25 ان کے پاس گاہک آتے تھے, اس کی جگہ پہ 3 سے 5 گاہک ان کو ملنے دن کے, اور ان کے پاس بھی بہت سارے آپشن ہیں گاہک کے پاس, تو وہ خود کیا کرے, بل دے, اپنے کرایہ دے شاپ کا یا کاروبار کرے. لوگوں نے ایکسٹرا چیزیں بند کر دی ہیں, ایکسٹرا انٹرٹینمنٹ بند کی ہوئی ہے, ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں. لیکن یہ لوگ تو کر رہے ہیں, حکومتی اخراجات کم ہو رہے ہیں کہ وہ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی ہیں. ہمیشہ کوشش اپنے گھر سے کی جاتی ہے. آپ جو مرات لے رہے ہیں, آپ جو پروٹوکولز لے رہے ہیں, آپ جو ہوائی جہاز کے ٹکٹ فری لے رہے ہیں, ریل کے ٹکٹ فری لے رہے ہیں, پیٹرول کے آپ کی پورے پیٹرول کے آپ کے ایلوکیشنز ہیں, وہ ایلوکیشنز آپ لے رہے ہیں, یہ سب بھائی چھوڑ دو. یہ اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ لوگوں کو اس کو بالکل فوراً چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کوئی 500 بلین کا یہ خرچہ ہے, یہ ایک دم سے ہاف ہو جائے گا, ایک دن میں ہاف ہو جائے گا. ایک فیصلہ آ جائے یہ ایک دن میں ہاف ہو جائے گا, یہ 200 بھی نہیں رہ جائے گا. کتنا فرق پڑا آپ کے خزانے میں؟ 300 بلین کا فرق پڑا, 350 بلین کا فرق پڑی. یہ سب نہیں ہو سکتا. بالکل عام آدمی ملا ہے, وہ ہر چیز میں اپنا گلا گھونٹ کر بھگتے اور یہ سب چیزیں کنٹینیو رکھیں. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا سیریسلی. لیکن سر عام آدمی بھی تو ابھی پہلے جو احتجاج ہوتے تھے ان میں, اب وہ بیچارہ احتجاج کرنا بھول گیا ہے, اس کو ڈر ہے کہ اب کیا کروں. وہ جا کے پیٹرول پمپ کی لائن پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار بھروا لوں, یہ ہفتہ 10 دن ہو سکتا ہے میرا یہ ٹینک چل جائے. تو وہ ایجیٹیشن بھی نہیں نظر آ رہا. جہاں آ رہا ہے وہاں پہ لا انفورسمنٹ کے لوگ بیچارے ان کے ساتھ جو حالات کرتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. کہیں چوٹ لگ گئی, کہیں تھانے گیا میں, تو پھر میں ہو گیا. تو سر وہ بالکل اپنے بری طرح مارا لوگوں کو, لائٹ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ آنسو گیس, فائرنگ, لوگوں کو گھسیٹا, اب وہ بھی ایک عورتوں کو پکڑ کے بند کر دیا. اب کریں تو کریں کیا؟ ہاں بتائیں مجھے, سچ اے ہیلپ لیس سچویشن. بس جو بات ہم کر سکتے ہیں اظہار کر سکتے ہیں اظہار کرتے ہیں, شاید ان تک بات پہنچ جائے. اچھا یہ جو ابھی کل بھی مصدق ملک صاحب یا ان کے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 15-20 جولائی تک یہ حالات رہیں گے, لیکن ہمیں تو حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے تھے. یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ 15-20 دن؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو 1 جولائی سے تو آپ کا سیل ٹیکس بھی واپس ہو رہا ہے, لیویز بھی لگ رہی ہے پیٹرول پہ, پیٹرول کے پرائسز بھی بڑھنے جا رہے ہیں, الیکٹرکسٹی کے آن کارڈز ہیں, ایڈجسٹمنٹس بھی ہیں اس میں, ان کے اوریجنل ٹیرفز بھی انکریز ہو رہے ہیں. یہ سب تو کلیئر کٹ بات ہے. پھر کیا حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ حالات تو بدتر ہونے جا رہے ہیں. انفلیشن تو مزید بڑھنے جا رہا ہے, مہنگائی اور ہے. لوگ کہاں سے دیں گے, پے کریں گے؟ کسی کی ایک پیمنٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ کیپیسٹی کرش ہو گئی ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ لمٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں سب مثلا یو ہیو نو آنسر ٹو دیز کویشچن ایکسیپٹ فار ون تھنگ کہ پالیسیز اپنی تھوڑی ٹھیک کریں, دیکھیں کس طرح سے عام آدمی اور غریب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, کس طرح اس کو ریلیف ہو سکتا ہے. کس طرح ہم نے بات آج کری سیلریز کی, ٹیکس لائبلٹی, وہ ریلیف کے لیے بات کی ہے, وہ ریلیکسیشن کے لیے بات کی ہے. اس طرح کی باتیں ہم کریں تو ہو سکتا ہے ان کے تک پہنچیں یہ باتیں. سری لنکا سے کتنے دور ہیں؟ I don't know, but if you ask me economically, we were very near. ابھی تھوڑے سے ہمیں فورن ایکسچینج میں کچھ ریلیف آ گئے ہیں, تو میرے خیال ہے تھوڑا دور نکل گیا, اور تھوڑا اتنے قریب نہیں ہے جتنے. وی ور ویری کلوز,
वी वर वेरी क्लोज, वी वर एज क्लोज एज वी आर नेबर्स। सही। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है बिकॉज हमें थोड़े से फंड्स भी आ गए और थैंक्स टू नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट में दबा कर पैसा भेजते हैं और उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज की कुछ इक्विलिब्रियम बनती है थोड़ी बहुत। अच्छा, दूसरा अतीक साहब, नेबर कंट्री कहें या कहें कि पाकिस्तान का हिस्सा ही था, वहाँ पे 30 से 40 लाख ख़वातीन मेहनत करके और जनरेट करती हैं फंड्स। एक्सपोर्ट क्वालिटी उनकी ज़बरदस्त है, एक्सपोर्ट उनका बढ़ गया है, सारा कुछ बांग्लादेश का देखें तो अब बढ़ गया है। हम 60 लाख ख़वातीन को हर महीने वजीफ़ा दे रहे हैं, उनको स्किल नहीं दे रहे, तो ये चीज़ें पॉलिसीज़ में कब ठीक होंगी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट पॉइंट। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले प्रोग्राम में ग्रोथ ऑफ आवर इकनॉमी पे बात की थी, उसमें हमने कॉटेज इंडस्ट्री पे बात की थी। और हमने कहा था कि हमारे सिंध की कॉटेज इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉटेज इंडस्ट्री। हमारी टोपी, अजरक और दूसरी तमाम चीज़ें, ये हमारी निशानी है सारी दुनिया में एक पाकिस्तानी होने की। और हम किसी को तोहफ़ा भी देते हैं तो अपनी टोपी देते हैं, अजरक देते हैं, सब कॉटेज इंडस्ट्री है ना, हमारी ख़वातीन घर में काम करती हैं, बनाती। इसको गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना है, गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोशन पे काम नहीं किया। सही। आप अपनी, उन्होंने किया ना, आपने भी एग्जांपल दे दिया ना उनका। तो हम भी कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारे बैंक्स या हमारे स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम्स वगैरह जो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे चल रही हैं, ठीक है ना, वो इस पर काम करें, कॉटेज इंडस्ट्री पे काम करें। उनके इंसेंटिव्स हैं, उनके लोन्स मिलते हैं, उनके माइक्रो फाइनेंसिंग है, उनके बड़ी वाइबल किस्म की माइक्रो फाइनेंसिंग है। हमारी माइक्रो फाइनेंसिंग इज़ बैक्ड बाई 2 प्रॉब्लम्स। वन इज़ कोलेट्रल, रहन रख दो, जो कुछ है तुम्हारे पास रहन रख दो तो पैसा ले लो। दूसरा क्या है कि हमारी माइक्रो फाइनेंसिंग का जो मार्कअप रेट है वो इतना ज़्यादा कि मैं और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीब आदमी तो किस तरह से लेगा। तो ये सब सोचना होगा, मार्कअप रेट कम करो, ये कोलेट्रल लेना बंद करो। तीसरा क्या है कि ट्रस्ट करो उन पे। चौथा ये है कि इंसेंटिवाइज करो, तो उनको कोई लैंड भी दो, कोई जगह दो, कोई ऐसी सस्ती जगह दो जहाँ पे वो ये कर सके, क्योंकि वो बेचारे रहते छोटे घरों में ना। तो जब आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को करेंगे तो मैं आपको फिर टारगेट दे रहा हूँ, पिछली दफ़ा मैंने बताया कि मेरे जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं उसमें 10 बिलियन से 15 बिलियन तो सिर्फ हमारे सिंध की ख़वातीन कंट्रीब्यूट करेंगी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री में। अच्छा सर, ओवरऑल पॉलिसीज़ को देखने की बड़ी शदीद ज़रूरत नहीं है? आप देखें अफ़गानिस्तान के जो लोग आए यहाँ पे बन के, मतलब 35-40 लाख लोग, उसमें से हार्डली कुछ ही लोग वापस गए। वो हमारे काफ़ी ऐसे जो पश्तो स्पीकिंग भाई हैं उनका भी हक खा रहे हैं, उनकी जगहों पे उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे कर लिया और ना वो मानते हैं ना वो जाते हैं, वो बैठ गए हैं। ना ही हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी कि उनको वापस अपने मुल्क भेजा जाए। तो ये एक बहुत सवाल है जिसमें, क्योंकि 30-35 लाख लोग एक अच्छा खासा बर्डन है, तो ये पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से हों कि कुछ ये अखराजात अपने कम किए जाएँ, लोगों को भेजा जाए, अपने मुकामी लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। तो पॉलिसीज़ किस पे बात करके किस पे बात करें? पाकिस्तान इतने बुरे हालात में रहने के बावजूद भी आपने देखा है माजी में दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिरीन को पाल रहा था। हाँ, अभी भी न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, रिहाइश का, सबका ख्याल कर रहा था। अभी पाकिस्तान खुद बेबस है। हाँ, तो मेहरबानी करें, अब नो मोर रिफ्यूजीज, और जो हैं तो अब वो किस तरह उनको, वो तो सेटलर्स हो गए हैं ऑलरेडी, आप उनको तो कह भी नहीं सकते। तो बात सारी है कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि उसमें उनके जो फिगर्स हैं वो बढ़े ना। सही। क्योंकि हमारे लिए तो अब अपनी पॉपुलेशन की को मरात नहीं दे पा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं है, तो दूसरे तो हमारे पर लाइबिलिटी बन जाएंगे। और उनकी वजह से, माफ़ कीजिएगा, हमारे लोकल लोग सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा अतीक साहब, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है इकोनॉमी को, सब कुछ, तो इस बजट को आपने कैसे मतलब देख रहे हैं कि ये बजट जो है वो कातिल बजट है या गरीब दोस्त बजट है ओवरऑल? देखिए, अगर आप बजट पे मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि इनको चंद चीज़ें ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि जो एनर्जी क्राइसिस पे एक आम आदमी फंस गया है, इनको कोई चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, इन्होंने ऐलान किए तो थे कि हम, वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक किया काम, वो काबिल तारीफ़ है। मैं कहता हूँ जो पिछली गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स लगा दिया था, वो विड्रॉ कर दिया। इंटरनेशनली जो सोलर है हमारा, वो इन्फ्लेशन हिट है, बहुत महंगा हो गया सोलर पैनल।
ان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہر آدمی سولر خرید سکے. اپنے بجٹس میں کچھ اس طرح کی پروویژنز دیں کہ ہر آدمی ایزیلی سولر کو انسٹالمنٹس پہ لے سکے اور آرام سے پے بیک کر سکے. یہ پاسبل تبھی ہے جب گورنمنٹ انرجی کے آلٹرنیٹس پہ کچھ اپارچونیٹیز دے گی, انسینٹیوز دے گی, اور یہ مسنگ ہے. ابھی تک کچھ چیز ایسی آئی نہیں ہے. دیکھیے صرف سولر نہیں ہوتا, سولر پینلز نہیں ہوتے, اس کی الائڈ پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں. ہو رہا کیا ہے کہ اس کی انسٹالیشن پہ بھی ایک ٹیکس ہے. مائی گاڈ, آپ دیکھیں آپ سولر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کی انسٹالیشن پہ بھی ایک ٹیکس لے رہے ہیں. یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور مین جو پرابلمس ہیں لوگوں کے اس کے اوپر دھیان دینا پڑے گا کہ مہنگائی کو, انفلیشن کو بجائے اس ہوشربا طریقے پہ اس تیزی سے بڑھانے کے اس کو کسی طرح ریڈیوس کرنا ہے, ورنہ انسان کو سانسیں نہیں آئیں گی, بڑا مشکل ہو جائے گا. اور بجٹ کچھ بھی بنائے, کتنے بڑے بڑے فیگرز بنائے, پھر میں ایک بات کہوں گا, دس از آل جگلری آف فیگرز. ہر سال ہر مہینے ہم پوسٹ بجٹ پری بجٹ میٹنگز کرتے ہیں, بجٹس پہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن مین ایشو از کہ ایک آدمی کو سستا کھانا ملے, وہ کھانا آرام سے کھائے, اس کے گھر پہ پنکھا چلے, بجلی آئے, اور پیٹرول سستا ہو, وہ اپنی جگہوں پہ آ جا سکے. آج آپ 10 دفعہ سوچتے ہو کہ آپ وہاں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے, یا آپ پھر کہتے ہو چلو پھر چلے جائیں گے, یا اس طرف جائیں گے تو ادھر چلے جائیں گے. مطلب کتنے پرابلمز آ گئے. تو یہ ساری چیزوں سے تو نکالنا ہوگا, اور یہ آپ کے بجٹ سے ہی آپ نکال سکتے, لیکن آپ کا بجٹ ہمیشہ فسکل بجٹ ہوتا ہے. 7,440 بلین روپے کا آپ کا ٹارگیٹ ہے ٹیکس کا. آپ نے اس میں ایڈیشنل ٹیکسز ڈال دیے 446 بلین روپے. تو یہ تو آپ بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا, عوام کو مزید تھوڑی سی سختی برداشت کرنی پڑے گی. ہم نہ چاہتے ہوئے عوام کو ایک اور تھوڑا سا, دیکھیے یہ تھوڑی سی سختی نہیں ہے, لیکن یہ عوام کا نام لے رہے, اشرافیہ کا اپنے وہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. وہ ویسے کا ویسا سسٹم چل رہا ہے جیسے ان کا چل رہا تھا. دس از دی آنسر. یو سی دے نیڈ ٹو چیک آل دس. دیکھنا پڑے گا ان چیزوں پر, ان کو بالکل اسٹریٹ اوے یسٹرڈے بیسس پہ ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ the problems are there. سر یہ تو بڑا اچھا. سر جو چھوٹا سرمایہ دار کہیں یا کاروبار کا ایک طبقہ ہے, وہ تو بالکل پس جائے گا. دیکھیے جو چھوٹا تاجر ہے یا جو دکاندار ہے یا آپ کاٹیج انڈسٹری ہے یا ایس ایم ایز والے ہیں, they are under tremendous pressure. ان کو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ایکسیس ٹو فائنینس ہے. دیکھیے جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ بینک سے لون لیتے ہو, ٹھیک ہے. پچھلی گورنمنٹ کی بڑی زبردست ایس ایم ای کی فائنینسنگ کی اسکیمز آئیں اور وداؤٹ کولیٹرل آئیں, بغیر رہن کے. اسی طرح کی اسکیمز کو ان کو اور ماڈیفائی کر کے ایزی کرنا پڑے گا, لوگ بینک سے لون لے سکیں, نئے کاروبار. دیکھیے نوکریاں تو ہے نہیں نا, پہیا تو چل نہیں رہا نا, نوکریاں ہے نہیں, تو ایکسپینشن آف امپلائمنٹ نہیں ہے, کانٹریکشن آف امپلائمنٹ ہے. اللہ نہ کرے لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں. تو لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ پہ جانا ہوگا, اپنا کاروبار کرنا ہوگا, اپنے ہی کوئی راستے نکالے ہوں گے جس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. اس کے لیے جو بھی انٹرپرینیورشپ ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے, اور وہ انٹرپرینیورشپ میں فائنینس چاہیے, وہ بینکس ان کو لون دیں, وہ لونز کی اسکیمز ایزی کریں, ایکسیس ٹو فائنینس ایزی کریں. وہ ایزی ہو اس لیے نہیں سکتا کہ آپ کا مارک اپ کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ون آف دا ہائیسٹ. ابھی آپ کا پھر انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھنے والا ہے. تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہو تو پھر یہ ٹائٹننگ ہے, یہ ٹائٹننگ آف دی پالیسیز ہے. گلا گھٹ رہا ہے, لوگوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے. اس میں آپ کو تھوڑا ریلیکس دینا ہوگا. بھائی اب ان کے پاس جاب نہیں ہے, ان کو کاروبار کرنا, تو ان کو پیسہ دو نا, تو یہ کاروبار کریں. تو یہ چیز پہ دھیان دینا ہوگا. اور جو سب سے بڑا کاروبار ہے وہ آئی ٹی ہے. وی ہیو ٹو پروموٹ آور آئی ٹی انڈسٹری. اس پہ ٹیکسز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ اس پہ انسینٹیوز ہونے چاہیے, اس پہ ٹیکس ہالیڈیز ہونی چاہیے, جتنا ہو سکے لوگ گھر میں بیٹھ کے آئی ٹی پہ کام کر سکیں اینڈ دے کین ارن. اور ابھی اتنا پوٹینشیل اور انسینٹیو ہے, اس پہ اتنا پریمیم اویلیبل ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ پیپل شوڈ گو فار آئی ٹی. اور اس کے لیے کوئی اتنے بڑے فائنینس کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے آپ کے اکیوپمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کے نالج کی ضرورت ہے, آپ کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے.
यू नो देयर आर वेज एंड मीन्स टू लिव, तो ये सबसे अच्छा तरीका है समझ। अच्छा सर, एक तो वो लोग हैं हमारे पास जो आपने जैसे कहा कि IT से रिलेटेड कर लें, वो मखसूस लोग हैं जो कंप्यूटर भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं, या कंप्यूटर से मुराद मेरी कि ऑनलाइन बिज़नेस करें या किसी भी हवाले से गैजेट्स के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो बहुत चंद लोग हैं हमारे पास। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो कारोबार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक फ़र्द कमाता है, 8 से 10 लोग वो बैठ के खाते हैं। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वज़न एक पे होता है, 4-6 बंदे डिपेंडेंट होते हैं। सर आप सच पूछे तो दिस इज़ टू बैड। हाँ, ये कहीं और हमें नज़र नहीं आता। दिस इज़ टू बैड। मैंने बार बार कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी और ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, और मैं कहता हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरह हमारे घर की ख़वातीन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दे कैन कंट्रीब्यूट, हर घर से कॉटेज इंडस्ट्री पे कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है और एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, दैट कैन ऐड वैल्यू टू द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ। चाइना ने ऐसा किया, बांग्लादेश ने ऐसे किया, नेबरिंग कंट्री इंडिया ने ऐसे किया, सबने ऐसे किया। ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद वो अपना सिस्टम ठीक किए जा रहा है, उसके लिए दुनिया बंद है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अलग हैसियत रख रहा है। हमारे पास सारी चीज़ें ओपन है, दुनिया ओपन है, बिजनेस, लेकिन सिस्टम बन के नहीं आ रहा हाथ में। वी बैडली नीड अ रोड मैप। मैंने हमेशा कहा है कि एक रोड मैप क्रिएट करने की ज़रूरत है, और कोई तो होगा जो इस मुल्क के लिए इकनॉमिक का रोड मैप बनाएगा। हमें सबसे बड़ी बात जो करनी है ना, वो ये करनी है कि हमें पॉलिटिकल चार्टर से निकलना है। पॉलिटिकल चार्टर से इसलिए निकलना है कि सियासत की बात करेंगे तो एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे से गलत करेंगे। ज़ाहिर है हर एक का एक सोच है, मेरी कुछ है, किसी की कुछ है, इन सोचों को आप मिला नहीं सकते। तो एक सोच अगर कौम आइंदा 2 साल के लिए सिर्फ पैदा कर ले, और वो है इकोनॉमिक चार्टर। एग्जैक्टली। हर आदमी इसी बात पे मेरा भी होता है कि जिन लोगों को अपने घर का सिस्टम बनाते हुए हमने नहीं देखा, उनको वोट देकर हम भेज देते हैं और उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे अभी भी कुछ ऐसी मतलब जिम्मेदारियां उन लोगों को दी गई हैं जिनका उस डिपार्टमेंट से, उस चीज़ से, उस शोबे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्यों ना टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो चला सकते हैं, जो कर सकते हैं, और जिनका आपकी बात की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, और ना ये कि भाई मैं अगर ये कर जाऊंगा तो अगली हुकूमत पर मुझे वोट नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा तो मैं सत्यानाश कर दूँ मईशत का, सारी चीज़ों का, डिसीजंस में इसमें। ऐसा नहीं है कि सारे टेक्नोक्रेट्स या काबिल लोग या अपने अपनी फील्ड के लोग सारे मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इस मुल्क में अभी भी लोग बैठे हैं जो दिमाग रखते हैं और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना। आप उनसे मुशावरत करें, उनको अपने साथ मिलाएं, तब तो आपको कामयाबी मिलती है और आपको सही डायरेक्शन मिलेगी वहाँ से। बेशक उन लोगों को आप लेकर के आए हो जो जिनका कोई शोबा ही नहीं है और आपने उन शोबों का सरबराह उनको बना दिया, तो आप खुद ही समझ सकते हैं फिर क्या होगा। देखें आप, छोटा सा इदारा भी होता है तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर क्यों कामयाब है हमारे? और आप देखिए छोटा इदारा भी होता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो अपने एडवाइजर्स एक्सपर्ट्स रखना शुरू कर देता है और अपनी डिपार्टमेंटेशन करता है और बताता है ये मेरा मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, मेरा ऑडिट का डिपार्टमेंट है, मेरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, और अपने आप को डिपार्टमेंटाइज करता है। तो इस तरह मुल्क को भी डिपार्टमेंटाइज करना है विद दी एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट, और वो सारे अवेलेबल हैं। ऐसी बात नहीं कि वो अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि मशावरत करें और स्पेशलिस्टों के साथ एडवाइजेस लें और वो क्या कहते हैं किस तरह करना है, तब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज नॉन टैलेंटेड पीपल हेडिंग दी इकोनॉमी, हेडिंग दी डिपार्टमेंट्स, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। अतिक साहब, ये तो मतलब हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। होप क्या है? हम एक मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं और हमें अल्लाह ताला से बड़ी अच्छी उम्मीद है, और उम्मीद अपने घर से शुरू करता है इंसान। इफ़ आई एम डूइंग हार्ड, आई एम डूइंग वर्क, आई एम ऑनेस्ट, मैं अपने नेबर्स का अपना ख्याल रखता हूँ और मैं अपने काम करता हूँ, जो कुछ मुझे आता है मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ, न सिर्फ ये कि सोसाइटी के लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी। तो आई एम श्योर कि अच्छे दिन मुझे ज़रूर मिलने वाले हैं, इस मुल्क को मिलने वाले हैं। कैसे सर? थोड़ा देखा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इट इज़ वेरी टेक्निकल, सिर्फ होस्ट पे बात नहीं करनी चाहिए।
अल्लाह ताला भी सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है ना। वी हैव, देखिए ना, ये सोच पैदा हो गई ना, आज आपने बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए मुझसे, ठीक है ना। ये सोच पैदा हो गई, हमें क्या करना है। आप यकीन जानिए इस वक्त हर आदमी की सोच है वो इस पर बात कर रहा है। जब वो बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर ये बातें कर करके एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर हम इस तरह के हो जाएंगे कि जहाँ हम रियल फेनोमेनास पे बात करेंगे, रियल फेनोमेनास पे काम करेंगे। और आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हर आदमी का एक लर्निंग स्टेज होता है। आई थिंक हम उस लर्निंग स्टेज पे ठोकरें खा खा के पहुँच गए। अच्छा अतीक साहब, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, बात से बात निकलती है। देखिए दुनिया में जैसे ये होप है तो वो मुल्क के इदारे संभालते हैं, वो कर रहे होते हैं कुछ। हमारे जो मुल्क के इदारे चलाने वाले हैं वो तो हमें तबाही के किनारे पे फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। हम सिक्योरिटी प्राइवेट ख़रीदते हैं, पानी प्राइवेट पीते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट है, हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी का बेड़ा गर्क है, एजुकेशन हम प्राइवेट बंदों को दिला रहे हैं, रोड रास्तों का हाल खस्ता है, कुछ भी नहीं। मतलब होप कैसे नजर है, कौन करे। देखिए हर रात के बाद एक सुबह आती है। सर हमें नज़र नहीं आ रही सुबह। मैं तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के बैठा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा कर रहा हूँ। आपने इतनी देर मुझसे बातें की, अच्छी बातें की ना, हमने अपने मुल्क की, अपने अवाम की, अपने लोगों की अच्छाई की बातें की ना, जो हमें आता है हम वो हम कर रहे हैं। तो हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन इसी तरह करे और अपने आप को बहुत स्ट्रेस फील ना करे। बिल्कुल स्ट्रेस सिचुएशन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वी आर डोमिनेटेड बाय द स्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसेस, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, इन हालात में रहते हुए भी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। अगर हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें इस तरह, तो एज ए नेशन आई थिंक हम अपने नेशन को, अपने मुल्क को इन प्रॉब्लम से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एंड वी हैव टू डू इट। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वी आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान हैज़ टू शाइन वन डे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम जो अॼु आगाज़ ज़बरदस्त थियो, अदी हुमेरा नूर सां कचहरी कईसीं। ज़बरदस्त शाइर, ज़बरदस्त लेखका ऐं उन सां गॾोगॾु NGO सेक्टर सां उनजो तालुक़ु ऐं बहितरीनु कमु कयो उन्हनि थर में, काछे में ऐं पंहिंजी फील्ड में तमामु माहिर रहियूं आहिनि पंहिंजी प्रोफेशनल फील्ड में ऐं बाक़ाइदे प्रोफेशनल। उन खां पोइ शेफ सां जॾहिं कचहरी कईसीं महर अली सां, त महर अली बि असांखे ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ॾिनी ऐं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनजो नालो आहे। दोस्तो असां अक्सर ईअं चवंदा आहियूं त जेके दोस्त असांजा वेठा हूंदा आहिनि घर में, ख़ासि तौर ते को न को हुनर ज़रूरु सिखिजे। हू शेफ, हुन कुकिंग सिखी। असां वटि छो रॉकेट साइंस वांगुरु असां उनखे सम्झंदा आहियूं त शायदि कुकिंग सिर्फ़ु औरतुनि जो कमु आहे, सिर्फ़ु 3 वक़्तनि जी मानी पचाइण जो नालो ई कुकिंग आहे। महर अली कराची में BBSYDP बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जे तहत ट्रेनिंग हासिल कई, सिखियो। 2012 में 2013 में दुबई वियो ऐं उते मुख़्तलिफ़ वॾियुनि फर्म्स में कमु करे थो। ज़बरदस्त पघार अथसि, बहितरीनु मेडल्स खटिया अथसि। उहो छोकिरो हिकिड़ी सोच आहे। असां छो नथा अॻियां वधूं कमु करण खे, छो असां आर था सम्झूं। जेकॾहिं मौक़ो मिले त असां ॿाहिरि कंदासीं, पंहिंजे मुल्क में न। ॿाहिरां माण्हू सिखी अची पंहिंजे मुल्क में घणो कुझु करे सघे थो, जेकॾहिं असांजी नीयत हुजे त। हाणे जेके मुल्क जा हालात वाक़ियात आहिनि, जीअं अतीक रहमान साहिब सां हींअर कचहरी पई थी, टैक्स ते असां ॻाल्हायोसीं, महांगाई ते असां ॻाल्हायोसीं। हींअर एतिरी महांगाई शदीद अचे पई, जेकॾहिं हींअर हिन वक़्तु असां पंहिंजे लाइ डिसीशन्स न कयासीं, हिन वक़्तु राइट नाउ, त जेके ईंदड़ 2-3 महीना आहिनि उहे इंतिहाई ॾुखिया थींदा। ऐं उन में जेकॾहिं जंहिंजी तयारी न हूंदी, उहे एतिरा त पोइ हिते कर्ज़दार थी वेंदा जंहिंजी का सोच न आहे। छाकाणि त हींअर असां वटि वरी बि पेट्रोल किथे भरायो थो वञे, किथे बि छॾियूंसि नथा निकिरूं, ज़रूरी न आहे। महांगाई तमामु घणी आहे, होॾे नथा वञूं, हिते हिन शइ खे तब्दील बाद में कंदासीं। जेके बि असांजा एक्स्ट्रा अख़राजात हुया उहे सभु बंदि करण जी फ़ौरी ज़रूरत आहे। फ़ौरी, जिथे ज़रूरत न आहे, जिथे ख़्वाहिश ऐं ज़रूरत ॿिन्ही खे हींअर सोचणो पवंदो। ख़्वाहिश त हींअर फ़िलहालु विसारे छॾे माण्हू, ऐं ज़रूरत बि सिर्फ़ु ॾिसणी आहे त आख़िर असांखे हिन शइ जी ज़रूरत आहे केतिरी, छा इन खां सवाइ आउं रही सघां थो। ठीकु आहे, लीव इट, नेक्स्ट टाइम थोरो वक़्तु ॾुखियो आहे, गुज़ारी वञे, उन खां पोइ ॾिसंदासीं। हींअर जॾहिं असां वटि स्कूल्स खुलंदा, ॿारनि खे ड्रॉप करिणो हूंदो, ॿारनि खे पिक करिणो हूंदो, उनखे छॾिणो हूंदो, त उन लाइ ज़ाहिर गाॾी खपंदी, या त पंहिंजी गाॾी, या त वरी जेका वेन हूंदी आहे की ॿारनि खे, या रक्शो हूंदो या चिंची जेको बि आहे, उन्हनि जा पाण हींअर किराया वधीक थी वेंदा।
सो इन करे असां हींअर जंहिं दौर मां गुज़रूं था असांखे हींअर ज़रूरी फ़ैसिला करणा आहिनि, सोचणो आहे। हींअर सीरियस हालात आहिनि, हींअर जेके हालात अञा नज़र अचनि पिया उहे जंहिंखे हींअर आमदनी नॉर्मल आहे, असां वटि आहे टोटल वर्किंग क्लास, असां पाण मिडिल क्लास में नथा अचूं। इहो पंहिंजो कॉन्सेप्ट क्लियर करिणो पवंदो त असां वटि साईं मिडिल क्लास आहे, न कंहिंखां घुरी सघे थो, न कंहिंखे चई सघे थो। इहो बेसिकली मिडिल क्लास न आहे, इहो सफ़ेद पोश क्लास आहे। बाक़ी असां वटि सॼो आहे वर्किंग क्लास। मिडिल क्लास त उहा वॾो माण्हू कमाईंदो करोड़नि में, जंहिंखे का परवाह न हूंदी आहे। मिडिल क्लास ऑटो ते हिकिड़ो सिस्टम हूंदो आहे, जेको 10-15 लख रुपया हुनखे महीने ते ईंदो आहे, त उहो हूंदो आहे मिडिल क्लास, जेके ईंदो रहे ऐं अख़राजात पंहिंजा कंट्रोल हुजनि, जेको शयुनि खे हलाईंदो रहे। बाक़ी जेको वर्किंग क्लास आहे, जेको 2 लख 3 लख 4 लख या लख रुपये 50,000 खां, जेको लोअर मिडिल क्लास मतिलबु लोअर वर्किंग क्लास या मिडिल वर्किंग क्लास में अचे थो, जेकॾहिं 3 महीना पघार बंदि थिए, कारोबार बंदि थिए, त पोइ छा इहो सॾिबो वर्किंग क्लास? त असां मिडिल क्लास हुयासीं। पंहिंजा ॻह खपाईंदो, पंहिंजा सामान खपाईंदो, पंहिंजी घर जी पूरत ऐं अख़राजात हलाईंदो। इहो वर्किंग क्लास आहे, जेको आणियूं ऐं चाढ़ियूं वारो क्लास आहे। जंहिंजे घर में 3 महीना पघार बंदि थिए त उनखे ख़बर पइजी वञे त जेके सेविंग्स हूंदी उहे ख़तमु थी वेंदियूं। सो इन करे असां जेकॾहिं असां हींअर चाहियूं था त असांजा हालात ठीकु थियनि, सिस्टम ठीकु थिए, त पाण खे सोचणो पवंदो। ऐं ॿिया उहे घर भाती जेके जंहिं घर में रहनि था, जंहिंजे घर में सिर्फ़ु वॾो भाउ कमाए थो, वॾो या वालिद कमाए थो, या वालदा नौकिरी करे थी, या को अहिड़ो जेको हिकिड़ो या 2 माण्हू कमाइनि था ऐं 7-8 ॼणा सिर्फ़ु खाइण ते आहिनि, उन्हनि खे हींअर सोचण जी ज़रूरत आहे, ॿांह ॿेली थियण जी ज़रूरत आहे, पंहिंजा स्किल्स डेवलप करण जी ज़रूरत आहे। हींअर जहिड़ा हालात अञा असांखे नज़र अचनि पिया उहे तमामु घणा गंभीर आहिनि। तॾहिं हालात बहितर थींदा त जॾहिं तव्हां असां सभु एक्स्ट्रा महिनत कंदासीं। को हिकिड़ो कमु कयूं था त हिकिड़ो कमु ॿियो स्टार्ट करणु खपे, जेकॾहिं 2 कमु कयूं था त हिकु 3हों कमु स्टार्ट करणु खपे। तॾहिं वञी करे शयुनि खे बहितर तरीक़े सां या इलाजनि मुआलजनि खे असां मुंहुं ॾेई सघंदासीं। अदरवाइज़ जेतिरी महांगाई हींअर ईंदड़ कुझु महीननि में नज़र अचे पई, इहा ॾाढी अलार्मिंग सिचुएशन आहे। असां निकिरी त ॾिसूं, या उहे असांजा दोस्त जेके वॾनि शहरनि सां या वॾनि इदारनि सां या पंहिंजे हिसाब सां ज़िंदगी खे गुज़ारनि था, हींअर सभिनी खे लॻ पता गया आहे सबको कि भई हालात कहिड़े पासे वञनि था। सो इन करे जेकॾहिं असां हाईवे वठूं, पंहिंजा 3-4 हाईवे जेके मेन हाईवे आहिनि, जेके वॾा रोड आहिनि, उन जेके 2 खां 3 किलोमीटर अंदरि वेंदासीं त ज़िंदगी ॾाढी अबोझ नज़र अचे थी असांखे। सो होप छा आहे? होप इहा आहे त निकिरजे, उथिजे, ॿाहिरि सेटल थियण जी कोशिशि कजे। जेकॾहिं कंहिं वटि दाणा आहिनि, जेकॾहिं को चाहे थो त हिन मुल्क खे सिस्टम में ठीकु कयूं असां, त हर माण्हू खे महिनत करणी पवंदी, पंहिंजा अख़राजात घटाइणा पवंदा। जेके एक्स्ट्रा आदतूं, एक्स्ट्रा अख़राजात, एक्स्ट्रा शयूं वाफ़िर मिक़दार में उनखे घटि करिणो पवंदो। ऐं पंहिंजी जेका महिनत आहे, पंहिंजी जेका जनरेशन आहे, जेका पाण जनरेट करे थो, कारोबार करे थो, उन में दिलि लॻाइणो पवंदो, पंहिंजे तालुकात खे ठीकु करिणो पवंदो, पंहिंजी शयुनि खे बहितर करिणो पवंदो, तॾहिं वञी ज़िंदगी जो ही गाॾो हली सघंदो। छाकाणि त हर घर ते हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ ज़िमेदारियूं थियनि थियूं। कंहिंजे घरनि में हींअर ॿारनि जी तालीम जा वज़न आहिनि, कंहिंजे घरनि में हींअर नियाणियुनि खे उथारण जा वज़न आहिनि, कंहिंजे घरनि में हींअर जायूं नंढियूं आहिनि, उन्हनि जी ख़ानदान में को ॿी जाइ जे लाइ सोचणो पवे थो। किथे किथे ॿारनि जे जेके नौकिरी जा चैलेंजिस आहिनि, ॿार डिग्रीज़ वठी वेठा आहिनि थिया, पर जॉब्स कोन्हनि खे, कारोबार मंदो आहे, जेको अॻु में असां वटि ईंदो घर में रोज़ानो जी बेसिस ते, उन में घटिताई आहे। त इनखे कीअं कजे? इन में कमु ईंदी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मैनेजमेंट। असां वटि मैनेजमेंट केतिरी आहे, कीअं आहे, दुनिया छा पई करे। असां जॾहिं मोबाइल जो इस्तेमालु कयूं था सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पाण खे एंटरटेन करण जे लाइ, एतिरी ॻणती में विहार न भला थोरो मूड चेंज थी वञे, त न। हींअर इन मोबाइल जो पॉज़िटिव इस्तेमालु इहो आहे त यूट्यूब ते वञिजे, उते सोर्सिस ॾिसजनि त छा करे सघूं था। सभु शइ मौजूदु आहे सोशल मीडिया ते, यूट्यूब ते, मुख़्तलिफ़ इन में। त असांखे हींअर सोचणो पवंदो, करिणो पवंदो त असां हींअर नेक्स्ट पंहिंजे पाण खे छाजे लाइ तयारु कयूं। त इन करे असांजा जेतिरा बि हींअर दोस्त, जेतिरियूं भेनरूं भाउर हीअ असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसनि था, उन्हनि खे असांजी इहा ई गुज़ारिश आहे त ख़ुदा हींअर पंहिंजो पाण ते कमु करण जी ज़रूरत आहे, ऐं तमामु घणी ज़रूरत आहे। हींअर हिकिड़ो महीनो बाक़ी बचो आहे जुलाई जो, तंहिंमें ईद बि हूंदी, ॻोठु वञिणो पवंदो, उहे अख़राजात थींदा, सभु शयूं थींदियूं। बिजली जी लोड शेडिंग आहे, अल्टरनेट एनर्जी सभिनी खे खपनि। ज़ाहिर आहे हुन लाइ बैटरी ख़रीद करणी पवंदी, UPS वठिणो पवंदो, जनरेटर वठिणो पवंदो, जनरेटर तेल ते हलंदो, छॾी जनरेटर खे गर्मी एतिरी आहे, ॿारनि खे तड़पंदो, ॾिसी नथो सघिजे, त ज़ाहिर आहे उनजे लाइ पैसा खपनि, जो सभु शयूं ईंदियूं। ऐं पैसा कॾहिं ईंदा? तॾहिं ईंदा जॾहिं असां महिनत करणु शुरू कंदासीं।
इन करे हींअर थोरो पाण खे सीरियस थियणो पवंदो, थोरो दुनिया खे ॾिसणो पवंदो, पंहिंजूं ॿियूं एक्स्ट्रा जेके एक्टिविटीज़ आहिनि, शयूं, आदतूं, अख़राजात, उनखे घटाइणो पवंदो ऐं हींअर पॉज़िटिव थियणो पवंदो। नेगेटिव थियण जी का ज़रूरत न आहे, जहिड़े चिटे जी का ज़रूरत न आहे। मस्बत सोच सां ॿिए कीअं कयो उनखे छॾे ॾिजे, पाण कीअं कंदासीं उनते फोकस करणु खपे। हींअर उहो छॾे ॾिजो यार हुन वटि हीअ आहे, हुन हीअं कयो, पोइ हुनखे हीअ सपोर्ट मिली, असांखे कुझु कोन्हे। दुनिया जो वॾे में वॾो जेको कूड़ आहे उहो इहो आहे त मूंसां हिननि हीअं कयो न त मां त अलाए छा कयां। दुनिया जो वॾे में वॾो माण्हू खे पाण खे पंहिंजी महिनत पाण करणी पवंदी आहे, तॾहिं सिस्टम हलणो पवंदो, पंहिंजी मसल्स ते ज़ोर ॾियणो पवंदो दोस्तो, कंहिं ॿिए जो इंतज़ारु न करिणो पवंदो। ऐं असांजा भाउर भेनर तमामु घणा पॉज़िटिव एनर्जेटिक आहिनि। असां हमेशह हिन प्लेटफॉर्म तां इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त हींअर असांखे तयारी करणी पवंदी ईंदड़ चैलेंजिस जी, जेके तमामु घण रुख आहिनि, मुख़्तलिफ़ आहिनि। तंहिंमें वबाऊं बि आहिनि, तंहिंमें महांगाई बि आहे, तंहिंमें बेरोज़गारी बि आहे, तंहिंमें कारोबार जा मसइला बि आहिनि, तंहिंमें बीमारियूं बि आहिनि। त इन करे जेकॾहिं सभिनी शयुनि खे मुंहुं ॾियणो आहे त ठीकु करिणो पवंदो पंहिंजे पाण खे। अॼु महिमाननि सां कचहरी कईसीं, ॾाढो सुठो लॻो। ओवरऑल प्रोग्राम में असांजी कोशिशि रही त असां इंफॉर्मेशन ॾेई सघूं कंहिं न कंहिं हवाले सां। तमामु घणा कारोबार आहिनि, तमामु घणी किरत आहे जेका करे सघिजे थी। सिर्फ़ु विल खपे, पंहिंजी विल खपे, की ॿिए जी न। दुनिया में जेको बि ॾुखियो में ॾुखियो कमु हूंदो आहे न, उहो 100 सैकड़ो हूंदो आहे न, त उनखे जेको 50 सैकड़ो आहे न, अधु कमु तॾहिं थींदो जॾहिं असां इरादो कयूं, जॾहिं असांजो इहो हिकिड़ो पुख़्तो इरादो थो थिए त असांखे करिणो छा आहे, मक़सदु छा आहे, त पोइ सही थींदो। असां सिर्फ़ु ख़्वाहिशूं खणी घुमंदा वठूं त बसि काश थी वञे, हा ईअं थी वञे। न, मुला अली जा केॾा बहितरीनु कॉल आहिनि जेको आउं बार बार दोहराईंदो आहियां, बार बार चवंदो आहियां त जेके ज़ईफ़ ज़हन हूंदा आहिनि उन्हनि में हमेशह ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि, ऐं जेके ज़रख़ेज़ ज़हन हूंदा आहिनि उन्हनि वटि हमेशह मक़सद हूंदा आहिनि। पंहिंजी मेज़बान सजाद सुहा खे इजाज़त, दुआ में ज़रूरु यादि कजो, दुआ जी ॾाढी ज़रूरत आहे। सुभाणे इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां मुलाक़ात करण जी कोशिशि कबी। सुभाणे ताईं अलाह निगहबान।